Rohan, my presentation is visible? Yes, sir. Yes, sir. It is visible. Yes. We will start by praying Ganpati Bappa. Lord Ganesha is the God of wisdom, God of knowledge. So, this is the agenda, friends, for today. First of all, we will go with brief history and legal background of income computation and disclosure standards. Then we will deal with relevant publications of ICAI. Then amendment in various sections of Income Tax Act 1961. Then we will go for common points for all ICDS. Then disclosures and reporting of ICDS in income tax return. Disclosures and reporting of ICDS in tax audit report. Then I will do technical analysis of section 145 and 145A of Income Tax Act 1961. And then I am planning to discuss valuation of inventories, ICDS 2, ICDS 4 revenue recognition, and ICDS 9 borrowing costs. Am I audible, friends? Yes. Am I audible? Yes, sir, but your presentation is not fully seen. Presentation is not fully seen. Sir, I think it is seen in my mobile also, in my laptop also. It is. I can see that. Okay, okay. So what is history and background of ICDS? First of all, central government has notified ICDS 2 tax accounting standards. The name was TAS in the year 1996. First was disclosure of accounting policies, and second one was prior period and extraordinary items. This position continues till 31st March 2015. And our job was very simple. We used to connect the prior period and extraordinary items. Accounting policies more and less remains the same. But on 31st March 2015, central government has issued notification number 32, whereby it has notified 10 income computation and disclosure accounting standards, which are made mandatory for the income under the head PGBP and income under the head other sources. And this ICDS, all ICDS are made applicable to all assessees following mercantile system of accounting. But this notification never seen light of the day. I will explain why. Because on press release dated 6 July 2016, the government has postponed applicability of ICDS from AY 1617 to AY 1718. And on 29th September 2016, before notification number 87, government published notification number 86, by which earlier notification was rescinded. And finally, notification number 87 came into existence with effect from AY 1718. One important change has been made in this notification as compared to earlier notification. That change is individuals and HUF who are not required to get their accounts audited are outside the purview of this ICDS. So basically what we have to remember, ICDS is applicable to all assessees except individual and HUF who are not required to get their accounts audited under section 44AB. And it came with effect from AY 1718. So today this baby is 4 years old. Then on 23rd March 2017, government came out with a circular number 10/2017, wherein 25 FAQs on ICDS are published by the government. Now, after going through this legal background, in short, what are the relevant publications of ICAI? One is Guidance Note on Tax Audit 2014 edition,
And another one is Technical Guide on ICDS, July 2017 edition. While going through preparation for this lecture, I strongly realized that guidance note, which is published by Institute in the year 2014, needs revision. This came under the purview of Direct Tax Committee of ICAI. I think as a branch, we should write to ICAI, request ICAI to publish revised edition on tax audit because many things have changed after 2014. Now I will go snapshot of amendments by Finance Act 2018. One thing we have to remember that whenever there is a clash or conflict between the provisions of Income Tax Act and provisions of ICDS, naturally provisions of Act or rules will prevail. So Finance Act 2018 have made various amendments to provide statutory backing to the various ICDS. I have prepared a chart. ICDS 1, section is 36(1), Roman 18. Amendment came for deduction for mark-to-market loss or other expected losses in accordance with ICDS. Then ICDS 2 and ICDS 8, that is valuation of inventories and valuation of securities. 145A has been suitably amended. It says it shall be valued at lower of cost or net realizable value, which is in line with value as provided in ICDS 2. Then inventory in nature of securities is to be valued in line with ICDS 8 securities. Then ICDS 3, that is construction contracts, and ICDS 4, CB has been amended, income from a construction as well as service contracts. Hello. I request Satish Ayer. Income from construction as well as service contracts on the basis of percentage completion method. Contract revenue to include retention money. Incidental income in nature of interest, dividend, or capital gains shall not be reduced from the cost but shall be offered for income. Then ICDS 4 and ICDS 7, 145B has been amended. Interest received on compensation or enhanced compensation deemed to be the income of the year in which it is received. Claim for escalation price or export incentives that is taxable in year in which reasonable certainty of realization is achieved. Income from subsidy, grant, cash incentive, duty drawbacks, waiver, concession, taxable in the year of receipt if not charged to tax in any earlier previous year. Then ICDS 6, 43A has been amended. Any foreign exchange gain or loss in respect of specified foreign currency transaction shall be treated as income or loss computed in accordance with ICDS 6. Then this chart elaborates to whom ICDS provision is applicable. Assessee must have income under the head, profits and gains of business or profession and income from other sources, having method of accounting mercantile. If cash, no ICDS provisions applicable. Mercantile, other assessees have to follow ICDS. Individual and HUF, if they are under tax audit, they have to follow ICDS. Otherwise, they do not have to follow ICDS. Then I have prepared this chart which shows relevant accounting standard and equivalent Ind AS standard for ICDS. All ICDS, I have prepared this chart. Then, where to disclose ICDS in income tax return? In all income tax return forms, there is one schedule known as Schedule ICDS
it has 3 columns. One is serial number, then ICDS, effect of income computation and disclosure standards on profit and amount, either positive or negative. Net effect ICDS wise one has to give. Here, in second ICDS, we have to remember one very important thing. Valuation of inventories. There specifically it is given, other than effect of change in method of valuation under section 145A. If the same is separately reported at column 4D or 4E of part A, other income. That means 145A disallowances are not supposed to be reported here, are to be reported in column 4D or 4E. We will discuss that later. Then in income tax return, in part A, other information, in 3A column, we have to report increase in profit or decrease in loss because of deviation, if any, as per ICDS notified under section 145(2). Column 11(3) of schedule ICDS, and 3B column decrease in profit or increase in loss. I think in most of the softwares we are using, this amount will be automatically calculated. Then in income tax return at third place, in schedule BP, we have to report in point number 25, increase in profit or decrease in loss on account of ICDS adjustments and deviation in method of valuation of stock. Column 3A plus 4D, part A OI. I think figure will be auto captured. Then in point number 33, decrease in profit or increase in loss on account of ICDS adjustment and deviation in method of valuation of stock. I have checked. Hello. Hello. I have checked where to report ICDS as far as income from other sources are concerned. But I have not found any place to report deviation of ICDS as far as income from other sources are concerned in return of income. Then, where to report disclosures and reporting of ICDS in tax audit report? We all are well aware of the fact that in forms 3CD, under clause 13, there are 6 subclauses now, A to F. A tells about method of accounting employed in previous year, whether it is mercantile or cash. Then change in method of accounting employed as compared to previous year. If there is any change in method of accounting, effect or loss. That means first 3 clauses, 3 subclauses of clause 13 deals about method of accounting. Purposefully, I have included old clause D of clause 13. Previously, it was deviation in accounting from accounting standards prescribed under section 145. But after ICDS brought with effect from 1/4/2017, this clause has been changed. And the now clause reads like this: whether unmute करा. Hello? Am I audible? Rohan? Yes, sir. You are audible. Yes. Then clause D revise is showing whether any adjustment is required to be made to the profits or loss for complying with the ICDS notified under section 145(2). Then in clause E, we have to give, if yes, give the details. Now here in tax audit report, one change is there. In income tax return, we have to report hello.
Hello? Rohan? Now you are audible. Hello? Am I audible? Rohan? Yes, sir, you are audible, sir. Okay. Then in clause F, we have to disclose as per ICDS for 8 standards. For 2 standards, no disclosure requirements in the, hence that 2 standards are not included. One is change in foreign exchange rate and other is securities. अरे माझे पुढे का नाही जाते गिरीश? Friends, now you can unmute and ask questions if any. Up to this, any questions? Hello, friends. आतापर्यंत कोणाला काही असेल तर विचार. Please mention your questions in the chat box. जर काही क्वेश्चन्स असतील तर प्लीज रेज हँड करा किंवा चॅट बॉक्स मध्ये प्लीज मेन्शन करा. Shall I move further? Yes, sir, please. अरे पुढचं काही येत नाहीये. तू ते बाजूला क्लिक केलं ना, परत याच्यावर क्लिक करायचं. क्लिक करायचं. Yes. Friends, now we will turn to very important part of today's discussion. Now I will go with technical analysis of section 145. Section 145 has 3 subsections. I will read subsection 1. Subsection, basically section 145 deals with method of accounting. Subsection 1 tells us that income chargeable under the head profits and gains of business or profession or income from other sources shall, subject to provisions of subsection 2, be computed in accordance with either cash or mercantile system of accounting regularly employed by the assessee. Very simple, this deals with method of accounting, cash or mercantile. Then subsection 2. Subsection 2 tells us that power of central government to notify ICDS from time to time. And using that power, central government has notified 10 ICDS with effect from assessment year 17-18. And subsection 3 deals with power of AO, assessing officer, to pass best judgment assessment if ICDS are not followed. If you do not follow the provisions of ICDS, AO can pass best judgment assessment under section 144. Now I will move to the technical analysis of section 145A. Section 145A basically deals with method of accounting in certain cases. Section 145A starts with the word for the purpose of determining income chargeable under the head profits and gains of business or profession. That means provisions of 145A are restricted for computation of income under the head business and profession only and not to anywhere else. Section 145A has 4 subclauses, Roman 1 to Roman 4, and it also has 2 provisos with 2 explanations. Now I will go each of them. Subclause 1 of section 145A
runs like this. The valuation of inventory shall be made at lower of actual cost or net realizable value, computed in accordance with income computation and disclosure standards under subsection 2 of section 145. This is lower of cost or NRV is in line with accounting standard also. But the whole drama starts in subsection 2. Subsection 2 reads, the valuation of purchase and sale of goods or services and of inventory shall be adjusted to include the amount of any tax, duty, cess or fee by whatever name called actually paid or incurred by the assessee to bring the goods or services to the place of its location and condition as on the date of valuation. I will also go with proviso along with this subclause 2. The proviso reads like that, provided that, no, I will go with explanation 1. The explanation 1 reads like that, for the purpose of this section, any tax, duty, cess or fee into bracket by whatever name called under any law for time being in force shall include all such payment notwithstanding any right arising as a consequence to such payment. The whole drama starts with provisions of subsection 2 and explanation 1. Only provision subclause 2 and explanation 1 deals with ICDS 2. Other subclauses and other provisions deals with ICDS 8 valuation of securities. The reading together subclause 2 explanation 1 clear-cut indicates that the section wants inclusive method. And practically we all are following exclusive method of accounting. And the whole drama starts inclusive method versus exclusive method. But if we look very carefully, this is not a new thing. This exclusive inclusive method going on since 1999. An institute has came out with a guidance note. Guidance note clearly tells us that inclusive method and exclusive method has no impact on net profit of the assessee, and years together we are doing that. Para number 23, 23.1 to 23.4 of guidance note on tax audit issued by ICAI clearly tells that inclusive method and exclusive method give same financial results and do not have any impact on the profit of the assessee. The same fact is reiterated by ICAI in technical guide on income ICDS, and also same thing is reiterated. Friends, now I turn over to the ICDS second, valuation of inventories. Now, before going to presentation in detail, friends, if you analyze any balance sheet, inventory is a substantial part. Inventory forms major portion of asset in every balance sheet. And what are the practical aims for that? Then I will go into details of my presentation. Now, generally, accounts are maintained in Tally software in most of the cases. We see accounts with inventory and accounts without inventory. If there are accounts with inventory, what caution we have to take while doing tax audit exercise? We have to see for each item of inventory, whether same method is followed. That means if PIPO is followed, PIPO is there in Tally software or not. Then we have to see
whether relevant direct costs are included in inventory ledger or not, and we have to check whether there is any shortage. Our job will become more difficult if accounts are maintained without inventory. How to value inventory when accounts are maintained without inventory is the big challenge. In that case, we should tell client to prepare list of inventories as on 31st March. And we have to do analysis of purchases and sales and arrived at certain GP rate, which should commensurate with what we are disclosing in return of income. Then let me come to the ICDS 2 provisions proper. What is the scope of valuation of inventories? Now, inventories are defined as assets held for sale in ordinary course of business, in the process of production for such sale, or in the form of materials or supplies to be consumed in production process or rendering of services. This is the definition of inventory. Then what are the exclusions? Work in progress under construction contract is excluded. Why? Because it is to be valued as per ICDS 3. Other work in progress are also excluded because no ICDS are yet notified. Then what to do? Other WIPs. It should be valued as per our accounting policies regularly followed. Then shares, debentures and financial instruments held as stock in trade are also excluded because it is to be valued as per ICDS 8. If you recall, all other subclauses of section 145A and provisos and explanation deals with this ICDS 8 only. Then producers' inventories of livestock, agriculture, etc. are also excluded because they are to be measured at net realizable value. Then machinery spares, which can be used in connection with tangible assets, irregular in use, are also excluded because they are to be dealt as per provisions of ICDS 5 tangible assets. Then which methods are permitted? FIFO, weighted average, retail method or specific identification method are permitted. ICDS also reintroduced standard costing method. Then what are the other key points of valuation of inventories? Lower of cost or NRV. Goods as well as services are also included. Then method of valuations once adopted cannot be changed without reasonable cause. In that 25 FAQs, one question is asked, what is reasonable cause? It is not defined, etc. So very typical answer is given by CBDT. Answer is the phrase reasonable cause is well established over a period of time. So what is reasonable cause is one's own perception. Then distribution costs are excluded. Cost of service, in case of service provider, to include cost of labor, supervision, personal and attributable overheads. In case of newly commenced business, cost of inventory on date of commencement of business shall be the opening inventory. Then value of opening inventory is to be same as the value of closing inventory in the immediate preceding year. Then how to measure? Measurement is very simple. Cost or NRV, whichever is lower. Then what is to be included in cost? Purchase cost. Purchase cost comprises of purchase price plus duties and taxes plus freight inward plus other direct expenses minus trade discount and rebate. Here we have to see that as an auditor, duties and taxes we are not incorporating. GST specifically we are not incorporating. Except GST, other taxes you have to include.
freight inward to be included, other direct expenses are also to be included, trade discount and rebate are of course to be excluded, then cost of service, cost of conversion and other direct cost. Then what are exclusions? Abnormal cost wastages are exclusion, storage cost is exclusion, administrative overheads are exclusion, and selling costs are exclusion. This is all logical, but here I will share one practical experience. Storage cost is specifically excluded in measurement of valuation of inventory. But before 2 years, I have found one case where one particular item of inventory has been stored in a warehouse. Then what contention I have taken? Key other direct cost will prevail over storage cost, and I have included that warehouse expenses exclusions. And here we are not including duties and taxes, that is GST. For that, we will consider it further. Then, very important point, valuation of inventory in case of dissolutions. Specific point is included in case of dissolution of partnership firm or AOP or BOI, notwithstanding anything, whether business is discontinued or not, the inventory on the date of dissolution shall be valued at net realizable value. This provision may have some far-reaching tax effects, more specifically in case of real estate developers or builders, because here the valuation cost or net realizable value, whichever is lower, is not available, and in many cases net realizable value will be much more as compared to cost in the books of accounts. So while taking any decision on dissolution part, one has to take appropriate care. Then, what are the disclosures in valuation of inventories? Accounting policies adopted in measuring inventories, including cost formula used, are to be disclosed. Total carrying amount of inventory and its classification are to be disclosed. Item-wise inventory list is to be there. If accounts with inventory are there, list should be there in your audit file. And what is the formula you have used that you have to disclose, whether it is FIFO or weighted average, that you are supposed to disclose. I have done some recommendations or suggestions. Even though section 145A recommends inclusive method for valuation of inventories, guidance note on tax audit issued by ICAI in paragraph number 23, para 23.1 to para 23.4 elaborately discusses the said provision and draws conclusion that adjustment envisaged by section 145A will not have any impact on trading account of the assessee. In other words, both under exclusive method of accounting and inclusive method of accounting, the gross profit and in trading account will remain the same. The same fact is also reiterated by ICAI in paragraph 6 of Technical Guide on ICDS. Suitable examples are also given in guidance note on tax audit. So in the light of above, it is recommended to prepare working of inclusive method and exclusive method as suggested in guidance note. And it is recommended to upload the same along with tax audit report if you are confident about same working. If you are not confident, prepare the working and keep it in your tax audit file. Don't upload. Matter is one's own choice. Then, very important question. In case of presumptive dealers, suppose my turnover of business is 1 crore
and GST is 18 lakhs, 18%. I am dealing in only one item, 18% tax rate. Shall I pay 8% tax on 1 crore or 1 crore 18 lakhs? Yes, participants. Hello. Shall I pay tax on 1 crore or 1 crore 18 lakhs? Okay. In case of composition dealers under GST, turnover of sales is automatically calculated as per inclusive method and no conflict with section 145A arises. In all other cases of presumptive taxation, it is advisable to declare profit as per turnover of sales under exclusive method. Now, I will give you 3-4 more additional points which are not discussed in guidance note or in technical guide on ICDS in the regime of GST. Those points are as under. The turnover, the word turnover is not defined under Income Tax Act. However, the word aggregate turnover is defined under GST Act. And there, the quantum of GST is specifically excluded. Then in the GST regime, we have to prepare separate ledger accounts for output GST and input GST. And that ledgers are reflected on GSTN portal also. Third important point, in income tax return also, one schedule is there, schedule GST, wherein income tax people expects me to tally turnover as per GST and tally turnover declared in tax audit report. So this all supports exclusive method. Any questions, participants now? Yes, you can unmute and ask questions. Yes, participants. Any questions? नंदू भाऊ विचारू का एक हो विचारा ना. कंपोजिशन डीलरच्या बाबतीत टॅक्स येणारच नाही कारण कंपोजिशन मध्ये टॅक्स कलेक्शनची परवानगी नाही त्यामुळे जो सेल्स टर्नओव्हर आहे बरोबर आहे. नंतर दुसरी गोष्ट इन्स्टिट्यूटची गाईडलाईन्स नोट जी आहे म्हणजे आपण सुरुवातीपासून 1999 पासून ती फॉलो करतो आहे. फक्त ICDS आल्यानंतर एकच त्याच्यामध्ये एक रिझर्वेशन जे आहे तर जितक्या बी म्हणजे 1999 पासून ते 2017 पर्यंत ICDS किंवा ICDS त्यावेळेस नव्हतं पण 145 वर जितक्या बी केस लॉज आहे त्या केसला डिपेंड करता का ओपनिंग स्टॉक इज टू बी रिस्ट्रिक्टेड इफ देयर वॉज अ ऍडजस्टमेंट अंडर सेक्शन 145. आणि आता ICDS 2 ला एक रिझर्वेशन दिलेलं आहे त्यांनी का ओपनिंग स्टॉक अर्लियर इज द ओपनिंग स्टॉक ऑफ द करंट इयर इज द क्लोजिंग स्टॉक ऍज डिक्लेअर्ड फॉर द अर्लियर. That will create some problem because institute guidelines is prepared logically very correct, but in example given, if we go for serial number 6, 7, 8 and onwards, it was something adjustment on account of consumption and other thing, which is practically not possible in retail traders and even in some other cases also. Yes, sir. That's why I have told ki you try to prepare working as suggested in guidance note. And if you are confident, then and then only you attach working along with tax audit report. Otherwise, don't attach working along with tax audit report. Exactly, it is very difficult. Matlab, the institute has given it considering that there is some stock or there is no much of stock. But if practically we go into the large cases, it is very difficult to calculate according to the serial number 6 to 10 of the ICAI guidance. Sir, consumption figure, frankly speaking, consumption figure is balancing figure, nothing else, sir. That is true, but if somebody asks for the back working, it is very difficult. In some cases, it will be. Sir, in some cases it will be difficult, but in most of the cases where accounts with inventory is there, it is possible, sir. Because. But in ICAI guidelines note, it was treated as a unit price uniformly, whereas the unit price is changing on day basis. Definitely, sir. Definitely.
So what Thank you. Thank you. we have to prepare working. At least we should start preparing working in 1 or 2 years. At least working should stabilize and difference will be minimum. The whole contention is based on exclusive method and inclusive method gives the same result. That is the of contention in guidance note as well as technical guide. And as far as presumptive taxation also concerned, I have seen many replies on internet. Why one should pay tax on GST quantum? Suppose my turnover is 1 crore and GST is 18 lakhs. Why I should pay 8% on 18 lakhs? And what is not included in institute guideline, aggregate turnover definition under GST and GST ledgers will also help in our favor. This is what I think. That is true. But in composition under GST, composition dealer is not supposed to collect the tax. Composition dealer you have to go as per inclusive method only, sir. Yes, definitely. In composition, as far as composition is there, you have to go as per inclusive method of sales and you have to pay tax on inclusive method only. Exclusive method is not choice for composition dealers. Composition dealer, there is no choice. You have to follow inclusive method only, sir. Exactly. Yes, sir. That only I have given in the slide. As far as composition dealers are concerned, you have to follow inclusive method only, no second choice. Yes, any other question? Thank you, Nandu. Thank you. Yes, sir. Yes. Any other question, sir? Anybody? How much time left at my disposal? Sir, half an hour, 30 minutes more. 30 minutes more. So friends, what I suggest is I will deal with borrowing first because borrowing cost has many points to be discussed and I will keep revenue recognition last. So I will switch to borrowing cost first and then I will come to revenue recognition. I will finish borrowing cost, then I have given some recommendatory disclosures as far as point 14F is concerned and last I will keep revenue recognition. Yes, sir? Borrowing cost lana na पुढच्या याला. Friends, now I will start with my discussion on ICDS 9 borrowing costs. What are the relevant sections of Income Tax Act for borrowing costs? I have tried to list these many sections I have found out. First of all, in definition, section 228 capital A, definition of interest. Then 36 Roman 3, deduction of interest under the head PGBP. In this, the technical guide on ICDS differs what borrowing cost suggested. I will discuss that case. Then 14A, expenditure incurred in relation to exempted income. This 14A will lost its significance from current financial year because now dividend on mutual fund and dividend on shares are taxable. For one, payment of interest to non-resident without TDS. 40A1A, payment to resident without TDS. 48 to be excessive and reasonable payment to relatives. 43(1), explanation 8, interest which cannot be capitalized. See, provision to 36 Roman 3 tells what can be capitalized and explanation 8 to section 43(1) tells us what can be capitalized. Both are given in the Act. 43B, certain deductions to be made only on actual payment basis. Here, subclause D, DA and E are relevant for interest payment. Then section 57, deduction in respect of income from other sources. These are the various sections I have tried to list out. Some sections might be left.
Then what is borrowing cost? Borrowing costs are defined as interest. Interest is included predominantly upper portion only, and other costs incurred in connection with borrowing of funds. And it includes commitment charges, amortized amounts of discounts or premiums, amortized amount of ancillary costs, and finance charges in respect of assets acquired under finance lease. Then it specifically excludes actual or imputed cost of owner's equity and preference share capital. Except equity capital and preference share, all other are included. Then how to recognize? Borrowing cost directly attributable to acquisition, construction, or production of a qualifying asset are to be capitalized. This is the fundamental of this ICDS. Then what is qualifying asset? Qualifying asset is land, building, machinery, plant, or furniture being tangible asset. The definition of tangible asset is very, very specific. It includes only those assets which are included here. Land, building, machinery, plant, or furniture. That's all. No other assets other than this, no other tangible assets other than these is qualifying asset. Then know-how, patents, copyrights, trademarks, licenses, franchises, or any other business or commercial rights of similar nature being intangible nature. The definition of intangible asset is somewhat inclusive rather as compared to tangible asset. In technical guide also, it is specifically given that goodwill is also included in intangible asset. Then last part is very important. Inventory that require a period of 12 months or more to bring them to a sellable condition. This is also included in qualifying asset. Technical guide also tells that inventories in case of builders and developers will form part of qualifying asset. But it gives some other opinion also. I will come to that. Para number 4.5 of technical guide of ICDS on borrowing cost, wherein contradictory view is given by ICAI as regards to capitalization of borrowing cost on inventory. Now let me take one practical example. Let us see one builder is there. He is having two projects, project A and project B. In project A, he has sales of rupees 10 crores. And in project B, there is no sale. He has constructed construction of rupees 15 crores. And he has borrowed rupees 5 crores. And naturally, inventories for builders take more than 12 months. He has spent interest on 5 crore borrowing, say rupees 50 lakhs. Now, as per these provisions of ICDS 9, this is specific borrowing, entire 50 lakhs borrowing cost is to be capitalized, is to be added, rather capitalized, is to be added in the value of inventory. But here, I will go to para 4.5 of technical guide on ICDS. For the convenience of all, I will read that paragraph. A question does arise as to whether the requirement of capitalization of borrowing cost to inventory as per ICDS 3 is in conflict with provisions of section 36(1) Roman 3. While section 36(1) Roman 3 provides that interest paid in respect of capital borrowed for the purposes of business or profession is an allowable deduction, the proviso to this clause prohibits deduction only in respect of capital borrowed for acquisition of an asset till the date of the asset is first put to use. The term asset
used in this proviso has to be considered as capital asset given similar usage of the term in section 43(1) as well as section 43A. The proviso therefore applies only to capital assets acquired and not to stock in trade. This has been confirmed by the Bombay High Court in the case of CIT versus Lokhandwala Construction Industries. Of course, it is very old decision, 2003, 260 ITR 579 Bombay. Therefore, the provisions of the ICDS are in conflict with section 36(1) Roman 3. In such an event, in accordance with the ICDS, the provisions of section 36(1) Roman 3 being part of the Act would prevail over the provisions of the ICDS requiring capitalization of interest on borrowings for the purpose of acquiring stock in trade, which takes more than 12 months to be ready for the sale. Purposefully, I am giving this much weightage because this has many practical implications. I will like the views of some seniors on this particular point. Rati sir, Somani sir, Patel sir. Sir, your views, sir. Yes, sir. म्यूट है सर आंसर तो नहीं देखो Rohan, Yes, sir. can you meet Rati sir, Somani sir, Patel sir, senior Sahakar sir? Sir, all can unmute themselves and ask you the question. No, I want their views on this particular topic. If they are participating, please unmute them, and this is very important in case of builders and developers. I request seniors to unmute themselves. Sir, I think we can move on with the session, and in the end we can discuss everything. Okay. Okay, sir. Okay, sir. Thank you. Yes. So I have thoroughly put forth before you the provisions of ICDS which require the borrowing cost to be added in inventories, and para 4.5 tells something else. Then one very important thing we have to remember, criteria of 12 months or more for its acquisition, construction or production for other than inventories applicable only in case of general borrowings. Means borrowing costs are of two types, general borrowing and specific borrowings. So for specific borrowing, criteria of 12 months is not applicable for assets. But as far as general borrowing is concerned, criteria of 12 months is given in ICDS itself. Then borrowing cost eligible for capitalization. Specific borrowing, there is no issue. Actual borrowing cost incurred are to be capitalized. Then as far as general borrowing is concerned, amount to be determined as per prescribed formula. And formula is given A upon B into C. And in B, 3 situations are also given. Then when capitalization will commence? For specific borrowing, capitalization will commence from the date on which funds were borrowed. For general borrowing, capitalization will commence from the date on which funds were utilized. 2 different criteria is there for specific borrowings as well as general borrowings. Then cessation of capitalization, tangible, intangible assets, when the asset is first put to use. Then inventory, when substantially all activities necessary to prepare it for intended sales are complete. Then formula is there, A into B upon C. This every case wise you have to go, not only case wise, if in particular case 4 assets are acquired out of general borrowings, you have to apply formula 4 types asset wise, co-asset wise. I will not go into intricacies of that. Then what are the disclosure requirements?
The accounting policy adopted for borrowing costs should be disclosed. The amount of borrowing cost capitalized during the previous year, it should be disclosed. Then one very important thing that is given in FAQ also, I will go through that. Question number 20 of FAQ. There are specific provisions in the Act, read with rules, under which a portion of borrowing cost may get disallowed under sections like 14A, 43B, 40A Roman 1, 40A Roman 1A, 48 2B, etc. of the Act. Whether borrowing cost to be capitalized under ICDS 9 should exclude portion of borrowing costs which gets disallowed under such specific provisions. The answer given is since आय थिंक चांडक सर तुमच्या इकडनं म्यूट झालंय. म्यूट झालंय का बघतो. झालं आता चालू. हा झालं सर, चालू झालं. पुढे जा ना प्रेझेंटेशन. Sir, now it is audible. Yes, now sir. audible. Presentation will also start. Now I will move 14 disclosure parts in various ICDs. Recommendatory. This will vary case to case basis, but mandatory disclosures I have prepared and I will share with you. One, accounting policies. Disclosure of all significant accounting policy. The financial statements of the assessee have been prepared on historical cost basis. Assessee follows mercantile system of accounting and recognizes income and expenditure on accrual basis, except some items which are not material are directly charged to revenue whenever required. There is no significant change in the system of accounting followed by the assessee during the year under audit. While framing accounting policies, due care has been taken in respect of ICDs notified under the IT Act, except stated otherwise under the each ICD's disclosure. Very important disclosure prints. ICDS 2 valuation of inventories. Then I have tried to prepare items of inventories are measured at lower of cost and net realizable value after providing for obsolescence, if any. Cost of inventories comprises of cost of purchases, net of recoverable taxes and other costs incurred in bringing them to their respective present location and condition. Cost of closing inventory is ascertained on specific identification of cost method wherever possible. Sir, just 1 minute. Please share the presentation. It has been lost. Please share the presentation. Okay, presentation share. Okay. तेच कन्फर्म करायला ब्रांचमध्ये फोन केला होता की दिसते का स्क्रीन. Rohan, presentation is yes sir. आता आलाय सर. yes.
ICDS 2 मध्ये काय करायचं रिकमेंडेटरी डिस्क्लोजर्स तो थोडा मी प्रयत्न केला आहे. Items of inventories are measured at lower of cost and net realizable value after providing for obsolescence, if any. Cost of inventories comprises of cost of purchase, net of recoverable taxes and other costs incurred in bringing them to their respective present location and condition. Cost of closing inventory is ascertained on specific identification of cost method wherever possible. In all other cases, cost of inventory is calculated as per FIFO method. Third point, the assessee has followed system of debiting its purchases exclusive of GST, that is IGST, CGST, HGST, paid on its purchases. Separate accounts are maintained for credit availed of GST, IGST, CGST, HGST, ignoring the fact that whether these credits are utilized or not. At the same time, GST collected on sales are credited to separate accounts. After adjusting collection of GST in invoices against credit availed on purchases, the balance outstanding at the end of the year is reflected as asset or liability in the balance sheet. Inventory is valued net of taxes wherever taxes are paid separately and being adjusted against output liability, that is exclusive method of accounting is followed. Then items of inventory पुढे जात नाहीये. क्लिक कर आणि आता क्लिक करतो. As per para 23 of guidance note on tax audit issued by ICAI 2014 edition and para 6 of technical guide on ICDS published by ICAI 2017 edition, it is clear that there would be no impact on profit or losses even if the exclusive method is adopted vis-a-vis inclusive method prescribed under section 145A of ITI Act 1961 and ICDS Roman 2. The technical guide issued by ICAI on ICDS in para number 6 also confirms that para 23 of guidance note on tax audit issued by ICAI is equally applicable for valuation of inventory for ICDS. Accordingly, the overall impact of the adjustment made to comply with provisions of section 145A on the income of assessee is nil. In view of provisions of section 145A, guidance note on tax audit issued by ICAI and technical guide issued by ICAI on ICDS, no adjustment in the valuation of inventory as on 31st March 2020 is required to be made under ICDS. Then ICDS 3, what disclosures are needed? Construction contract, amount of contract revenue, method used to determine stage of completion, closing WIP, cost incurred and recognized profit, amount of advances received, amount of retentions. Then ICDS 4, revenue recognition. Revenue from sale of goods is recognized and recorded into accounts at the time of transfer of significant risk and reward ownership to the buyer. There are no transactions during the year under audit where revenue remains unrecognized due to lack of reasonable certainty of its ultimate collection. Specific disclosure is required. Purchases are shown at net of purchase returns and rebate on purchases. However, trade and cash discounts are separately credited to trading and profit and loss account. The amount of revenue from service transactions, then revenue has been recognized as per ICDS 4. Tangible. All tangible fixed assets are recorded into books of accounts at cost less depreciation. Cost comprises of purchase price and directly attributable cost of bringing the assets into working condition for its intended use. The assessee follows block of asset concept and depreciation is provided as per section 32 of the Income Tax Act 1961 and rules made thereunder. Depreciation is charged on written down value of the block of assets. All disclosures of ICDS 5 are made in answer to clause number 18 of form number 3CD.
Clause number 18, all questions generally match with disclosures of ICDS 5, so you can give that note also. Then about government grants, 4 disclosures are required. Nature and extent of government grants recognized during the year by way of deduction. Nature and extent of government grant recognized as income. Nature and extent of government grant not recognized by way of deduction, and nature and extent of government grant not recognized as income. Then ICDS 9, borrowing cost. I have made general disclosure. During financial year 2019-20, the assessee has treated all borrowing cost as revenue expenditure. There are no addition in fixed assets and no part of borrowing costs are capitalized. If capitalized, you have to disclose the amount of capitalized. Then ICDS 10, provisions, contingent assets and contingent liabilities. In the opinion of partners of the firm, there are no contingent assets and contingent liability on balance sheet debt. And one format also I have shared. Friends, now there is no time to discuss ICDS 4 revenue recognition. And I will like to dedicate this lecture to our beloved Sri R.R. Jaju sir, who is my teacher, who is my guide, who is friend, philosopher and guide for me, and who is my mentor. With my folded hands, I declare this lecture dedicated to R.R. Jaju sir. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you. You can unmute and ask questions. Thank you, sir. I request participants to either unmute themselves and ask question or mention your questions in the chat box. Sir, Madhusudan Ladda sir has one question. What is the impact of COVID on inventory valuation? Because many industries are hampered badly due to COVID situation. Inventories are basically to be valued at cost or net realizable value, whichever is lower. Valuation has been drastically reduced. You can always value. Okay. But you should have some supporting documents how you arrived at net realizable value. काही ठिकाणी नेट रिअलायझेबल व्हॅल्यू पण राहिलेली नाही त्याला. तुमच्याकडे सपोर्ट पाहिजे भाऊ काहीतरी डॉक्युमेंटरी नेट रिअलायझेबल व्हॅल्यू झिरो झाली आहे, तुम्ही ते झिरो पण करू शकता. ओके. डॉक्युमेंटरी एव्हिडन्स पाहिजे की त्याची नेट रिअलायझेबल व्हॅल्यू झिरो झालेली आहे. You have to prove ki net realizable value, how you arrived at net realizable value that you are supposed to prove. Okay. Yes. Any other question, friends? सर सारंग बोलतोय. सर सीसी मधनं कॅपिटल असेट ऍक्विजिशन. हॅलो, आवाज येतोय का सर? हो, येतोय सारंगी. सीसी मधनं जर का स्पेसिफिक बॉरोइंग म्हणजे असेट क्वालिफाईड असेट साठी जर का पेमेंट झालं असेल तर व्हॉट डू यू रेकमेंड? मी तर ते कॅपिटलाइज करतो डेज बेसिस वरती, पण सीसी जनरली इज टर्म्ड एज जनरल बॉरोइंग. येस, सीसी जनरल बॉरोइंग मध्येच जाईल आणि तुम्हाला ते जनरल बॉरोइंगचा जो फॉर्म्युला आहे A भागिले C. But few of my clients habitually use their cash credit for payment towards capital assets. आता सगळ्याच कॅपिटल असेटच क्रिएट झाले असेल तर यू कॅन ट्रीट दॅट. नाही, नॉट सगळ्या, बट लेट्स से 50 कोटीचं सीसी असेल तर 20 कोटी वापरतात ते. तर सर मग ते जनरल बॉरोइंग झालं ना. तुम्हाला त्याचं A भागिले B गुणिले C फॉर्म्युला. पण माझ्याकडे डे वाईज कॅल्क्युलेशन शक्य आहे ना की कुठल्या दिवशी कुठले पेमेंट झाले. आय हॅव द रेट ऑफ इंटरेस्ट, आय नो द डे प्रोडक्ट, मी तेवढा इंटरेस्ट एक्सक्लूड करतो. तसं करण्यापेक्षा सर जे ICDS मध्ये दिलेलं यू अप्लाय फॉर्म्युला A डिवायडेड बाय इंटू C. कारण ICDS स्पेसिफिकली सेज इन केस ऑफ जनरल बॉरोइंग्स, आणि जनरल बॉरोइंगला अजून एक सूट दिलेली आहे की जनरल बॉरोइंग मध्ये जर असेट क्रिएशनला 12 महिन्यापेक्षा जास्त पिरियड लागला असेल तरच यू कॅपिटलाइज, अदरवाइज यू डोंट कॅपिटलाइज. ओके सर, ठीक आहे. येस.
Any Sir, other? Huh? next question we can take of Abhijit sir, Abhijit Modi sir. Sir has asked, what valuation to be taken for stock in trade withdrawn by a partner from partnership firm? In trade, partners can withdraw at cost price. There is no need कि you have to include element of profit. सर मी बेसिकली म्हणजे प्रश्न असा आहे का हा. बिल्डर आहे आणि तो सपोज स्टॉक इन ट्रेड मध्ये एक फ्लॅट आहे, त्याची हा. कॉस्ट 50 लाख आहे, पण त्याची मार्केट व्हॅल्यू 70 लाख आहे. तर जर तो विड्रॉ करत असेल, 70 लाख आहे. पार्टनरशिप फर्म आहे का ही अभिजित? हो 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 पार्टनरशिप फर्म आहे सर. फंड डिझॉल्व होते, नाही फर्म डिझॉल्व नाही होते, तेच सेम पार्टनर कंटिन्यू करताय. येस सर. तुम्ही घेऊ शकता 50 लाखाला विड्रॉल. आय डोंट थिंक काही फार मोठा प्रश्न येईल म्हणजे. येस सर, येस सर. हा. ओके ओके. One cannot earn profits from oneself. That is the basic criteria. राईट राईट. अडचणीत असं नाही वाटत मला प्रॅक्टिकली. ओके येस सर. येस येस येस. Anything else? सर आत्ताचा जो पॉइंट होता अभिजित सरांचा, त्या केसमध्ये जर का कॉस्टला आपण फ्लॅट ट्रान्सफर केला, डिस्कस अबाउट द ट्रान्झॅक्शन बिटवीन फर्म अँड पार्टनर ऍट आर्म्स लेंथ. आर्म्स लेंथचा प्रश्न येईल मला नाही वाटत, कारण वन कॅनॉट अर्न प्रॉफिट फ्रॉम वन सेल्फ. दॅट इज द बेसिक क्रायटेरिया. But I feel partnership firm is a separate entity and Partnership. partners are different. आपण even including interest आणि remuneration याचे सुद्धा डिस्क्लोजर देत असतो. इट इज मीन्स ऍट आर्म्स लेंथ और रिझनेबल आहेत म्हणून. 43(2)B चा पण मीन्स ट्रान्झॅक्शन आणि परचेस सेल्स आणि ट्रान्झॅक्शन विथ पार्टनर्स और रिलेटेड पार्टीज. समजलं. बघायला लागेल थोडस, मला डिटेल मध्ये बघायला लागेल. तुम्ही म्हणता तो पण इम्पॉसिबल आहे दादा. येस Sir, one of the question from Bagrecha sir was whether interest paid on partners' capital will form part of borrowing cost. नाही, partners capital is not borrowing. Yeah, that is own money of the firm. It will not form part of borrowing. If you credit amount to partners loan account, situation will be different. But partners capital account and current account, I don't think it will form part of borrowing. Yes. Sir, next question from Rajendra Daga sir. Daga sir, if you can unmute yourself, we can have a direct conversation. सर चांडक सर, अभिजित बोलतो. हा बोला सर. आताची जी क्वेरी होती बागरेच्या सरांशी, त्याच्या रिलेटेड एक पॉइंट डिस्कस करायचं होतं, बोलू का? हा बोला. आपलं जर सपोज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कॅपिटल आहे, फार मोठा ड्रायव्हिंग फोर्स असेल, म्हणजे सपोज बिल्डरचीच केस घेऊया. 1 कोटी कॅपिटल इंट्रोड्यूस केलंय, 1 कोटीची लँड आहे आणि ती लँड तशी तशी स्टॉक इन ट्रेड मध्ये आहे, अजून पुढे जायचं आहे. 1 कोटीवरचं जर सपोज इंटरेस्ट 12 लाख आलं वर्षाचं, सर विल इट नॉट नीड टू बी कॅपिटलाइज टू स्टॉक इन ट्रेड? अशा स्पेसिफिक केस मध्ये यू मे थिंक. येस येस सर. सांगतो की बॉरोइंग कॉस्ट जो आहे ना, आपण जर ICDS बॉरोइंग कॉस्ट, सॉरी सर आवाज नाही करायचं तुम्हाला, म्हणजे ते त्यांनी कंपनीच्या ऍक्टनी क्लॅरिफाय केलंय, तर सेम लॉजिक विल अप्लाय हिअर फॉर पार्टनरशिप पण, असं माझं कंटेन्शन आहे थोडस त्याच्या बाबतीत. ओके सर ओके. पण स्पेसिफिक दुसरं काहीच नसेल आणि 12 लाख लॉस दाखवायचा असेल, तर यू मे थिंक ऑफ कॅपिटलाइजिंग द सेम. राईट राईट. येस येस येस. एनिथिंग एल्स?
अभिजित येस सर. माझी एक रिक्वेस्ट आहे, तू 4.5 पॅरा जो आहे टेक्निकल गाईडचा हा तो वाच आणि माझ्या प्रश्नाचं उत्तर देण्याचा प्रयत्न कर नंतरच्या ओळीने. चालेल सर, बोलू. माझ्या हिशोबाने तो मोठा प्रश्न आहे, कारण वन वे ICDS इज सेइंग की इट इज टू बी ऍडेड इन द कॉस्ट ऑफ इन्व्हेंटरी. ओके. आणि दुसऱ्या बाजूला आपली टेक्निकल गाईड म्हणतो की 36(3) अनुषंगाने यू कॅन ट्रीट एज बिझनेस एक्सपेंडिचर. समजा मला बाकीचा प्रॉफिट आहे, त्याच्यासमोर ते शकतो म्हणजे वाय शुड आय. चांडक सर, चांडक सर, एक प्रश्न होता. अभिजितची जी क्वेरी होती, वेन पार्टनर विथड्रॉज ॲट कॉस्ट, इट डझंट हॅव एनी इम्प्लिकेशन in the case of firm, but whether section 56(2) will come into play in the assessment of partner. त्याच्या केसमध्ये 56च्या याच्यामध्ये ते ऍड होऊ 56(2) transfer by firm to the partner of any movable immovable property for a consideration which is less than the FMV. डेफिनेटली सर, डेफिनेटली येईल सर तो प्रश्न. केसमध्ये मार्केट व्हॅल्यूला कमी जास्त राहील. बरोबर. 56(2) पण एक इश्यू राहील. 56(2) may come into picture in that case, though it may doesn't have any impact on the profitability of the firm. Yes sir, definitely sir. दादा सर, माझ्या जो पॉइंट मगाशी मी वेस्ट केला त्याच्याविषयी तुमचं काय मत आहे? 4.5 आणि ICDS and technical guide is saying something else. सर, तो डिबेटेबल इश्यू आहे बराचसा. इवन कॅपिटलायझेशन कॉस्ट ऑल्सो. बेसिकली इवन कॅपिटलायझेशन ऑफ इंटरेस्ट जरी असेल, पर्सेंटेज ऑफ कम्प्लिशन मध्ये प्रॅक्टिकल कॅल्क्युलेशन फार डिफिकल्ट असतात. डिफिकल्ट आहे. म्हणजे त्याच्यासाठी बरेचसे एक्सेलचे फॉर्म्युले वगैरे वगैरे करून कॅपिटलायझेशन किंवा नॉट एक्झॅक्टली कॅपिटलायझेशन, इन्व्हेंटरी मध्ये कॉस्ट ऍड करायची, त्याच्यातली पार्ट विच इज रेकग्नाइज, पार्ट विच इज अनरेकग्नाइज. इट मे क्रिएट अ प्रॉब्लेम. Yes. Then again going to section 145, if it is consistently followed, so there are n number of decisions. Yes sir. So even if there is a deviation in accounting method as prescribed or under any law, if it is consistently followed, there should not be any objection on following the same method. Yes sir. आणि अजून एक क्वेरी होती. इंड AS 115 ह्याच्यातल्या काही प्रोव्हिजन्स आणि AS 9च्या प्रोव्हिजन. इंड AS इज टोटली ऍप्लिकेबल फॉर दी कंपनीज विच हॅव टू फॉलो दी इंड AS. त्यांच्यासाठी मॅन्डेटरी आहेत. बरोबर आहे. तर त्याच्यासाठी मग इंड AS आणि याच्यात जर काही व्हेरिएशन असेल ICDS मध्ये, तर इंड AS कंपनीजनी रिटर्न मध्ये काय करायचं किंवा टॅक्स ऑडिटरनी काय? क्लॉज 13-14 मध्येच रिपोर्ट करायचं. क्लॉज 13-14 मध्ये रिपोर्ट. देर इज नो अदर वे. क्लॉज 13 आणि क्लॉज 14 शिवाय जागाच नाहीये त्याला रिपोर्ट करायला. रिटर्न मध्ये सुद्धा शेड्यूल ICDS मध्येच रिपोर्ट करायचं त्याला. ओके. नो अदर वे आउट. दुसरं काही त्याला स्कोपच नाहीये. म्हणजे the word AS is to be read as an Ind AS both. Because in case of companies or corporate entities, त्यांना mandatory Ind AS. Yes. 115. कॉम्प्युटेशन मध्ये ते ICDS जे काही आहे ते ऍड करून घ्यायचं, लेस करून घ्यायचं आणि त्याचं रिपोर्टिंग टॅक्स ऑडिट आणि त्याच्यात करायचं ते. ओके. येस सर. येस. रोहन, काही क्वेश्चन्स आहेत? हॅलो. हा सर, काही क्वेश्चन्स आहेत? मला वाटतं सर मॅक्झिमम क्वेश्चन्स आन्सर झालेले. येस.
I I think thank Nashik branch for giving me this opportunity for share my knowledge. Thank you, Rohan. Thank you very much. Thank you, Abhijit, for giving me this opportunity. Thanks. now I request you, sir, to offer formal vote of thanks for such a wonderful session by Chandak, sir. I am here to propose a formal vote of thanks on behalf of Nashik branch. I thank NR Chandak sir from the bottom of my heart to share his knowledge. I am also looking some appreciation in chat box from seniors in the profession. I also thank all seniors to take active participation. I further request Rohan to continue with the further things in seminar. Thank you, sir. Thank you, Chandak, sir, for such a wonderful session and giving your valuable time. Chandak, sir, was also a past chairman of Nashik branch, and he has very worked hard for well-being of our branch, and he is also every time available for any kind of work allotted to his part by branch. So once again, thank you, sir. Thank you from bottom of my heart. We'll move on to the second session. We will have a break of 5 minutes and continue the session. We will be having a session with Girish Ahuja, sir. So please come back very soon. We'll be starting right at 11:30. Thank you, sir. Thank you. Welcome, sir. Welcome. Thank you. Who is the chairman these days of the Nashik branch? Sir, CA Rohan Andhale. Sir, Rohan you are Andhale. talking He to talked to me. He talked to me. Sir, I am Rohan Andhale, sir. There you are. I'm not able to see you. Your photograph is Yes, there sir. only. Yeah. Yes, sir. And any central council member joining or regional council member joining? Sir, I am unable to hear you, sir. Any regional council member who has joined? No, sir. Anand sir was there for the first day, but not right now. Okay, then no central council member also, no? They are very touchy if we don't mention their name. That's why I'm asking. You have spotted the paining point, huh? Any other member of the executive committee? Yes, sir. Piyush Chandak sir is with us. Chandak is what? He is a member of managing committee member at Nashik branch. Okay. There is no other secretary or the vice president or chairman? No, sir. Secretary is not. Sir, namaste. Haji. Sir, namaste. Myself Piyush Chandak. Namaskar. I am accompanying Rohan sir with for this seminar. Okay. Good. I just wanted to know. I just wanted to know the names, That's why no other member is there, na? Okay. Good. हाँ सर, पीयूष चंडक है, रोहन सर जो है चेयरमैन है ब्रांच के,
वो तो मुझे पता लग गया, चेयरमैन नासिक ब्रांच. Yes, sir. Rohan Andhale. वो तो he Yes. talked to me several times. He talked to me. I talked to him in the morning also. That's Okay. not the point. हाँ. तो बाकी सब आप कैसे हैं वहाँ पे? बिल्कुल ठीक है जी, वो चल रहा है. अब थोड़ा बहुत तो जैसे आपने कर रखा है महाराष्ट्र का, हमारा भी शुरू हो गया. ज्यादा LV it was under control, but now it is in a shape. We are all contributors actually, sir. मतलब देखा जाए तो public is the contributor for all. We are not contributor. We are contributing to the, and we are doing lot of hard work these days for having these programs. Contributors जो हैं वो different persons हैं. बात तो बहुत सही है सर, बट मैंने क्या कंट्रीब्यूटर है, कोई क्लाइंट आ ही नहीं रहा, खाली बैठे हैं. कंट्रीब्यूटर क्या हो? सर एक्चुअली हम कह रहे हैं कि हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कुछ ना कुछ जो शो रन हो रहा है उसके लिए. अच्छा, वो ठीक है. In spite of being in this pandemic, we are running the show. Correct. Because of your support, people like your support. Everybody supports, sir. It's everybody support. It's not by support only. Everybody is doing it. About 161 lectures. Oh. In the 5.5 months time. Okay. This is 161th lecture. 162. 162. Wow, great. And today also in the evening I have one more. सर आपको तो बहुत डिफिकल्टी हो रहा होगा, आपको मेरे को मैं पता तो है. कह रहा हूँ ना, मेरे लिए तो फंस गया मैं. पहले तो एक लेक्चर देता था, 2 घंटे लगते थे, चलो ट्रैवल टाइम लगता था. लास्ट टाइम हम मिले थे तो आपने बताया था कि आपको इंटरेक्शन की बहुत आदत है और वो हो पा रहा होगा. 2 ही चीजें, एक इंटरेक्शन की आदत है, एक तालियां सुनने की आदत है. वो तालियां भी नहीं मिलती हैं, क्या करें. क्लैपिंग तो होती नहीं ना हमारी, वो गई ना जो सुनने का आवाज था. ये क्लैपिंग की आवाज ही नहीं आती है. वो क्लैपिंग जो होती थी हॉल में, मजा तभी आता है. सर वो भी थोड़ी दिन में आपको थोड़ा सा हम तकलीफ देंगे, नासिक ब्रांच बुलाएंगे मेरे ख्याल से. अभी तो सर कुछ ठीक हो जाएगा सर, सब कुछ, नो प्रॉब्लम. तो minimum 6 months nobody will travel, let me tell you. It's not going to be that easy. It's not going to be that easy. Yes sir. ये प्रॉब्लम कंटिन्यू रहेगी. Yes sir. Sir, I think all the participants are in और YouTube live भी चालू है. You can start. Should we start? Yes sir. Yeah, certainly. Yes sir. Sir, so welcome. Sir, coming to formal introduction, Dr. Girish Ahuja, sir, did his graduation and post-graduation from Sri Ram College of Commerce and was a position holder. He got his PhD from Faculty of Management Studies, University of Delhi. He has been teaching direct tax to students at various levels for more than 35 years. He is a fellow of Institute of Chartered Accountants of India and was placed in the merit list of both intermediate and final exam of the institute. He is a senior faculty member of Sri Ram College of Commerce, Delhi University, also visiting faculty member of Institute of Chartered Accountants of India, Institute of Company Secretary of India, and various management institutes. He has been nominated by government to the Central Council of the Institute of Company Secretary of India for 2 terms. He is a member of Fascicle Law Committee of ICAI and editorial board of ICSI. He is also on the board of directors of many companies and has a vast and rich experience in the field of finance and taxation. Also, Dr. Girish Ahuja is one of the renowned writer in the field of finance and taxation, especially in the areas of direct taxation. He has authored many books. One of them used by many practicing chartered accountants is Direct Tax Ready Neckner with Tax Planning. And he is also an authored books for CA Final and CA IPCC exams both. So with this brief introduction, I request Ahuja sir to address the gathering. Good morning to all. Good morning. Good morning. Let me first tell you, don't go to the Google for these biodatas or income tax, because the biodata which he has read is only 16 years old. Only 16 years old. What I'm saying is, don't worry. Sorry for that, sir. No. What I'm saying is, fiscal law is not there in Institute of Chartered Accountant. For last 16 years back, it was there. It is a direct tax committee. Earlier, it was
Earlier it was in tax committee, then it was direct and indirect was separated. There is nothing like that. I retired about 12 years back from the so that was a correct version, you know. So experience is now of 51 years. Experience 16 years back, 35. I am 74-year-old. So Yes, sir. I have already completed 50 year in my practicing Yes, sir, yes. chartered accountant also. So that's what I'm saying, you know. Don't read anything in income tax unless you are sure that it is updated. We Yes, have the sir, yes, habit sir. of going to the Google and seeing the section and we start reading it without knowing whether it has been updated or not. And there is continuous updation. So therefore, don't rely always on Google. It may be a very old data. It cannot be always, cannot be correct. That's why I'm saying, not saying anything, but what I'm trying to make it just a thing of introducing why I was saying that 35-year experience was there about 16 years back. And I put in the experience and then now I'm 74. And that time, what was my age? So that was a different story altogether. Coming back now. I've been asked to talk about transactions in shares and derivatives or whatever is this. Rohanji, this is the topic, na? Yes, sir. Yes, sir. Transactions in shares and derivatives. Let me first tell you about it. That we are going to do not only share, we are going to do transaction in shares, securities, and derivatives. The word security has been defined, no doubt, not in Income Tax Act, but in Security Regulation Act, Section 2, Clause H talks about the meaning of security. And if you look up that security there, it includes shares, it includes bonds, it includes debentures, and it includes units also. It's a part of security. Shares, how can share be a security? Because share has no security, but still the definition of security is given in Security Regulation Act. But when I talk to you income tax, please, wherever I use the word security, I can also use other than unit, or I may also use shares and other securities. So in many sections, the word used is shares, unlisted share, listed share. The word unit may not be there. The word securities also used, listed securities, but they have first used listed shares and securities. So my point is, one has to be very clear what I'm talking about. Am I talking about only shares? Am I talking about only securities? Am I talking about only unit? Or I'm talking about securities other than unit? That has to be very, very important whenever I talk about this. Let us come to now. You know that in a case of capital gain, but let us not talk about capital gain first. First, let me talk about now these shares or securities. You may hold it as stock in trade, or you may keep it as capital asset, as investment. Now, if you hold it as a stock in trade, you know that if you are in the business of buying and selling of securities, shares, bonds, and that, then it is business income, particularly shares, purchase and sale. It is a business income. But if you hold it as an investment, then it is capital gain. You know the difference between the business income and the capital gain. I may not tell you. But the courts have held that a person who is dealing in shares and securities can also keep separate portfolio as investments. It is not a problem. You can have both portfolio. One is stock in trade portfolio where there is a business income. Another is a portfolio for investment, where I request one thing, because everybody has disappeared. I can't talk to the walls or even to my screen. I would like to have 3-4 person in front of me so that I may know whether they are following. You know, when you go to teach there, when you go for a lecture there, an audience is before you. You can look into the eyes of the audience. I am not there and I'm not going to give you any presentation. I have to talk to you. I may ask Mr. Rohan, have you understood, Rohan? Or Rohan, if you're there, I also read the face of everyone. So I would request that at least 4 or 5 persons should be in front of me. I may not talk to the walls. I request all the members. आ गए 3-4 लोग आ गए
और भी आ सकते हैं, welcome, because I will see whether Rohan is following or not, or whether this such and such person is following or not, or I may ask question also there to them. No, don't worry, I will not ask embarrassing question. Don't worry. voice on mute. I will not ask any embarrassing question. I'm not going to test your knowledge. I'm going to ask you only whether you have understood Piyush or whether you have not understood Piyush. Piyush is here, the executive member. I have to ask him, understood? If he says yes, at least he will nod. Otherwise, I can read, I can see into your eyes also. So therefore, अब आई टू आई कॉन्टेक्ट तो मेल मेंबर से करूंगा, फीमेल से नहीं करूंगा, बट फीमेल तो कोई है भी नहीं है सामने मेरे, बट डोंट वरी अबाउट दैट. But what I'm trying to explain is, I want people, it is already there. Thank you very much. I'm coming back. So my point is, when I'm going to talk to you, that there is a capital gain. Even if you have a business, stock in trade portfolio of investment, but for a person like you, like me, we normally have investment. Otherwise we can't do business. A chartered accountant cannot do business at all. Let me tell you, and again I am warning you, chartered accountant cannot do derivative. He cannot do derivative at all, because derivative is treated as a business and you cannot do that. If you do that, you will be, income tax has no problem. The problem will be the Institute of Chartered Accountant of India, where the disciplinary action will be taken. How can you carry on a business? You cannot carry on a business. A chartered accountant cannot do derivative business, because derivative is a business. He cannot do intraday. It is a speculation business. He can only make investment. I'm talking about chartered accountant. I'm not talking about others. A professional are not allowed to do business. Our institute very clearly says that no one who is in practice cannot. And if you are going to do business, you will put into difficulties. So don't do derivative business, please. Don't do intraday. You can only do investment and nothing else. You can only do investment and nothing else. But I'm talking about others. Your client may be in the business of buying and selling of shares. He can also have a separate portfolio for investment. And client may be doing only investment into shares, securities. We have no problem. But wait. You may be an asset as shares. You want to convert this into stock in trade. You know, we have section 45(2). Conversion of capital asset into stock in trade is a transfer. Conversion of capital asset into stock in trade is a transfer. But capital gain on this transfer does not arise in year of conversion. It will arise in the previous year in which converted asset is sold or otherwise transferred. Let me give you an example, Rohan. Let's suppose I have Reliance shares, 2,000 Reliance shares, and I have many other shares. Not thinking of doing, I'm not a chartered accountant, then only will tell you. I'm a chartered accountant, I can't do. But suppose the client is thinking of doing business and he wants to convert these Reliance shares into stock in trade. Reliance share into stock in trade. Look here, Piyush, look here, it is a transfer. It is a transfer, but no capital gain at this stage. When will capital gain? Capital gain will arise in the previous year in which these Reliance shares are actually sold or otherwise transferred. Meaning, suppose I have 2,000 Reliance shares converted into stock in trade and they are lying with me. I have not sold them. Nothing is taxable. Till I sell it, nothing is taxable. But when I sell it, there will be two gains. One will be called business income. The another will be called capital. How much will be the business income? How much will be the capital gain? Sale price minus the fair market value of those shares on the date of conversion. On the date of conversion will be called business income. Are you getting my point? Will be called business income. And fair market value minus the index cost or whatever was the cost, if it will be treated as, what will be treated as capital gain. So there will be two profit at that particular time. When sell those shares, one be called business income,
How would I calculate business income? Sale price minus fair market value on the date of conversion. Business income. Fair market value minus the index cost or cost of acquisition, capital gain. But I want you one more. Suppose there were 2,000 Reliance share and I sold this year only 500 share and 1,500 are lying in the stock, still lying in the stock. So then what will you do? You will calculate capital gain only on 500 share and business income also on 500 share. Are you getting my point? 500 share sale price minus value, how many share? Not 2,000 share. Fair market value of share. Business income. Fair market value of 500 share minus cost, index cost will be capital gain. And 1,500 is still lying with you, no capital gain, no business income. Next, sell 1,000. Again, only on 1,000 there will be a capital business income. 500 will still be in the stock. So long as you don't let, there is neither capital gain nor business income. So one can running all, you can keep that share and sell the other share. But wait, when you're going to sell the other share, please note the system is first in, first out. First in, first out. So if at all you don't want to sell these shares, but you want to convert it in stock in trade, keep it in a separate depository. Keep it in a separate depository so that if you keep it in the same depository and then you purchase more Reliance share, then first out. Are you getting my point? First in, first out. And the moment you say first in, first out, you may have to pay tax. Because here it is not the physical script which you are selling the demat share. So my point is that in case you have converted a capital asset into stock in trade and you don't want to sell that and you want to buy more shares because you are doing the business now, keep it in a separate depository so that if you don't sell them at all, it is not a capital gain, neither capital gain nor business income till you sell those shares. So it is a carry out also. Otherwise, if you put it in the depository and you buy more share and want to sell share, then first in, first out. Are you getting my point, sir? First in, first out. Clear? It is clear. Now I'm giving you a very, very important point. And that is putting us into a lot of difficulty. People have not seen that. I'm bringing to you section 28, clause 6A, which was inserted 2 years back. Listen to me carefully. Section 28, clause 6A says conversion of stock in trade into capital asset will be treated taxable, will be taxable under business income. What are you doing? Mr. Rohan, we have a capital asset, we have a stock in trade, shares as stock in trade. I want to treat it now as a capital asset. I said, let me treat it as a capital asset. What will they say? It will be immediately the fair market value of that share on the date of conversion will be treated as your business income as per section 28, clause 6A. You are gone. You have not sold them. You have treated it as an investment. Still, it is lying with you, but it will be taxable there and then the moment you convert inventory into stock in trade. I give example for others. Rohan, what is I'm trying to explain? There are so many builders. You know, the builder is constructing, the office building, and he has constructed 6 floors of office complex. And he suddenly decides, let me keep 1 floor for my business. So what is he going to do? He is going to convert that asset, which is stock in trade, into capital asset. Am I right, sir? Into capital asset. The moment he converts this into capital asset, he will have to pay tax there and then on the fair market value. He's gone. He said, let me use for my own business. No, pay tax on that because you are a stock in trade into a capital asset. For stock, for share, so I can still imagine. Here he is not going to sell it. He's going to use for his own office. Still he says,
pay tax. Pay tax. What? Total fair market value. Pay tax today as business income. What is the use? And he's going to use it, and he's going to charge depreciation on that. He's not going to sell that. Are you getting my point? For share, you can think otherwise, because share people were planning. What were they doing? They were converting the stock in trade into capital asset to save tax. Because in a capital gain, less tax is there. In business, more tax. But now what have they said? 28 clause 6A. The moment you convert this capital as inventory into capital asset, there and then you will have to pay tax as business. Is this clear, sir? Those who are listening, is it clear? But if somebody has any question at this stage, if Rohan permits, they can ask immediately also. I have no problem. I have no problem. They can ask immediately. Yes, questions can be answered. If anybody has any question on this, Sure. I know there will be questions. Sir, now in the case of a partnership firm where there is a builder, there is a stock in trade of flats, and the partner is withdrawing that flat. So whether this will be treated as conversion of stock in trade into capital asset? No, sir. I'll come to 45.4 and then I will tell you about this also. Because in case of capital asset is taken, 45.4 is applicable. If you take the inventory, it will be otherwise treated as there will be a capital gain. Because these days, there is a problem of GST, there is a problem others also. You wait and watch. You wait and watch. But if you are converting this stock in trade into capital asset for the purpose of business, you will have to pay tax there and then. Am I right? This is very important. 28.6a, new clause added in section 28. People have not bothered. That's why. Any other questions? Any other has question? If there is a question of this nature in the chat also, you can ask. Otherwise, I'm proceeding. If there is a question of this kind, otherwise we'll take up question at the end. But I wanted to know that immediately if somebody watching me has a question, can ask me. At least those who are in front of me definitely ask me questions in mind. Otherwise, I'm proceeding further. Clear, sir? Clear? I'm proceeding further. So this is conversion of capital asset into stock in trade, and the other way around is conversion of stock in trade into capital asset. Now this capital asset can be shares, debentures, whatever I've told you. Now I'm coming to the next part. There are two types. Now, whether it is capital gain or business, I've told you, it is up to you. But we have a circular dated 4/2007. If you remember that if you are doing business, whether it will be called capital gain or business, the circular by 2007, dated 15 June 2007, had come out. But wait. Don't be in a rush. Now there's instruction number 6/2016, dated 29th of February 2016. Very, very instructions, both instruction 6/2006, dated 29th February 2016. What this instruction is saying? It is saying that if you are yourself saying, if the SSC himself says that I am doing business, then there is absolutely no problem. The income from the transfer of these assets, the shares and securities, will be called business income. If you yourself is opting that it is business, then it is that. Second case, if there are listed shares, if you have listed shares, which is held by you for more than 12 months, or listed securities held by you for more than 12 months, and that it is a long-term capital gain, you yourself says it is a long-term capital gain, then the AO will have to accept that it is long-term capital gain. But in future also, you will have to treat this as long-term capital gain. Once you opt that is going to be long
capital gain, but in future also, whenever you transfer these listed shares or you transfer listed securities after holding for more than 12 months, let me tell you, it will be treated as long-term capital gain. Then you cannot treat it as business income unless, of course, you transfer into stock and trade. That is a different issue. Otherwise, you will have to show it as, and in any other 2007 will be applicable. So still there is a dispute, but some dispute has been that once you show it as a listed share sold after 12 months or security sold after 12 months, I'm assuring you to say it a long-term capital gain. In future also, it will be treated as long-term capital gain and you will not have to bother about it. The AO cannot make a question to that. And if you say that it is my business income to all, then he has no problem. Then you have to show it as a business income for future also. In all other cases, circular number 4 by 2007, I told you 19/6/2007 will be applicable. Second point, there is an order. There is an order of the board dated 2/6/2017, 2/5/2016 order, where they have said all unlisted share, there is going to be, it cannot be business income. For all unlisted shares, it will be always capital gain. You cannot treat it as business income because you know that unlisted shares are normally capital gain and not business income. You have to read instruction, a board order 2/2016 dated, I told you 2nd May 2016. That order is also relevant for. So now I'm coming back. There can be two types of capital gain. One is called short-term capital gain. The another is called long-term capital gain. I need not tell you why do you make a distinction. And distinction is basically from the point of view of taxation. From the point of view of taxation. Because if there is a short-term capital gain, other than 111A, normal rate of income tax is applicable. Other than 111A. But if there is a long-term capital gain, there can be 112 section applicability or 112A section, which is concessional rate of income tax. So you have to decide whether it is short-term capital gain or a long-term capital gain. Now, short-term capital gain. What is a short-term capital gain? I'm telling you. Short-term capital gain is a gain arising from short-term capital asset. This is what is given. In section 2, clause 42B, short-term capital gain is a gain arising from short-term capital asset. And in section 229B, long-term capital gain is a gain arising from long-term capital asset. Then section 2, clause 29A, long-term capital asset is one which is not a short-term capital asset. कुछ समझ में आया? मेरे तो कुछ समझ में आया नहीं, ये कर क्या रहे? Law क्या कह रहे हैं? Short-term capital gain is a gain arising from short-term capital asset. Long-term capital gain is a gain arising from long-term capital asset. What is a long-term capital asset? Long-term capital is one which is not a short-term capital. तो अभी तक कुछ बताया लॉ ने? कुछ भी तो नहीं बताया. So आपको एक ही चीज बता दूंगा, सब समझ में आ जाएगा. What is a short-term capital asset? तो short-term capital asset क्या है? उसके बाद तो आपको सब समझ में आ जाएगा. कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट से बेचे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, एंड व्हाट इज नॉट ए शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट इज ए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा. तो मैं सेक्शन 2 क्लॉज 42A में जा रहा हूं, जहां शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट की डेफिनेशन दे रखी है. क्या लिखा है? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट इज एन एसेट which is held by the SSC for not more than 36 months immediately preceding the date of transfer. वो वाली एसेट 36 महीने, नॉट मोर देन 36 मंथ. ये ध्यान रखिए, नॉट मोर देन 36 मंथ. एग्जैक्टली 36 मंथ ऑल्सो इज व्हाट? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट. एग्जैक्टली 36. इफ इट इज मोर देन 36 मंथ, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट. बट फिर उसके बाद प्रोवाइजो डाले हुए हैं. प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ शेयर listed on a recognized stock exchange
or unit of the equity oriented fund listed on a recognized stock exchange. Please, यहाँ unit अलग लिखा है, unit of a equity oriented fund and listed share sold through recognized stock exchange. The period will be 12 months instead of 36 months. So long-term capital gain held for more than 12 months, short-term capital gain for listed share, not listed shares and unit of equity oriented fund. One more, zero coupon bond. I forgot to tell you. Listed share और second क्या बोला मैंने? Units of the equity oriented fund or old unit of Unit Trust of India and zero coupon bond. How much is the period? 12 months instead of 36 months. So if you hold it for exactly 12 months, short term, more than 12 months, long term. Now, another point for unlisted shares, please note the word unlisted shares. For unlisted shares and land and building or both, the period is 24 months instead of 36 months. दो चीजों के लिए 24 months है, ध्यान रखना. अनलिस्टेड शेयर्स, मैंने अनलिस्टेड शेयर्स बोला है, यूनिट नहीं बोला है. अनलिस्टेड शेयर्स कितना? अनलिस्टेड शेयर्स 24 months शॉर्ट टर्म. और दूसरा क्या बोला मैंने? लैंड एंड बिल्डिंग 24 months period, not for more than 12 months, 24 months short term, more than 24 months long term. ये क्लियर हुआ? तो जो यूनिट है ना, अगर तो इक्विटी ओरिएंटेड के लिए उसका 12 महीने है, और अदर यूनिट है और म्यूचुअल फंड कवर्ड अंडर 1023D उसके 36 मंथ्स हैं, 24 नहीं है, 36 मंथ. लोग तो गायब हो गए, मेरे सामने दो ही रह गए, बाकी तो गायब हो गए. क्या हुआ सर? मैंने कुछ ज्यादा कुछ नहीं कहा है, मेरे पास सिर्फ दो ही रह गए सामने में. उनका भी नाम है, एक तो पीयूष, क्या नाम है उनका, वो है, और दूसरे जेंटलमैन है राकेश, राजेश और राकेश. बाकी सारे गायब हो गए. क्या हुआ सर? सर सब चालू है, सब लोग है स्क्रीन आपकी पे. शक्ल चालू नहीं है, शक्ल चालू नहीं है सर. सर मेरे पर्दे क्या में ना रहो, पर्दे मत लगाओ, बेनकाब नहीं कर सर, दूंगा मैं आपको. सबका स्क्रीन चालू है, जितने भी है ना सर. नहीं जी, नहीं, मेरे सामने नहीं है, मेरे सामने सर मेरे सिर्फ दो ख्याल का से चालू कुछ है. कनेक्टिविटी मेरे को सर पीयूष लुनावा दिख रहे, बागरेचा सर दिख रहे. सर अभी आपका स्क्रीन ब्लैंक हो गया है. मेरा स्क्रीन तो चल राजाराम रहा है, सर मैं तो दिख रहे हैं. हाथ भी ला रहा हूँ. आपके यहाँ कोई प्रॉब्लम है? वेट कर लेता हूँ, ठीक कर लीजिए. सर मैं तो नहीं, हाथ भी ला प्रॉब्लम रहा हूँ, नहीं मेरे है हाथ भी कुछ. नजर आ रहे हैं. सर आ रहा है अभी सर? आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, आपका क्लियर आवाज आ रहा है. और मेरी स्क्रीन आ रही है? नहीं आ रही है सर स्क्रीन थोड़ी रुक रुक के आ रही है आपके तरफ से. तो चेक करिए, आपके यहाँ कोई प्रॉब्लम है, मेरे यहाँ तो बिल्कुल ठीक है. चेक कर लीजिए, मैं ये इंतजार करता हूँ. हाँ सर, आपने इधर से तो क्लियर है सब मेरे को इधर का सब लोगों को भी आई थिंक सर सबको दिख भी रहा है ना. राजाराम we सर are दिख रहे also हैं ना? facing the same problem. यस काही प्रॉब्लेम नाही. प्रॉब्लम है तो मैं दोबारा लॉग इन करूं क्या? सर कर देंगे तो भी चलेगा, अच्छा रहेगा. मैं करता हूँ, वो वेट करिए, नहीं तो मजा नहीं आता. मैं लॉग इन दोबारा करता हूँ. सायली मॅडम परत हे करून घ्या त्यांना होस्ट. सगळ्यांचे व्हिडिओ चालू आहेत, त्याच्यामुळे त्यांच्या बँडविड्थला काही प्रॉब्लेम येतोय का? नाही, त्यांना काही प्रॉब्लेम नाही सर. त्यांच्या इकडे थोडस कनेक्शन पुअर असेल, कारण की मला तर सगळे स्क्रीनवर दिसतंय. अब आ गया मेरा? आर यू एबल टू सी मी? आवाज तो आ रहा है, स्क्रीन अभी नहीं आया है. मेरे यहाँ तो बिल्कुल ठीक है. आपके यहाँ दिक्कत है सर, मेरे यहाँ नहीं है. ओके सर. मेरे को तो सबकी स्क्रीन नजर आ रही है. आई एम एबल टू सी एवरीवन. यस सर. सर आपका स्क्रीन शेयर कीजिए अभी. नहीं हाँ सर, हो गया एकदम परफेक्ट हो गया. ओके, फिर तो किसी ना किसी की गलती थी, कोई बात नहीं. कोई चीज ऐसी चीज, अभी मैं क्या बता रहा हूं, व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट. हाँ, पीरियड ऑफ होल्डिंग, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म. आई टोल्ड यू units other than unit of equity oriented fund 36 months. Units of equity oriented fund and listed shares 12 months. Listed shares and securities other than unit 12 months. Then
It is other assets, 36 months, short term. और आपको पता है हम short term क्यों करते हैं? Long term, if it is more than 36, 12 months or 24 months as the case may be. ये clear हो गया? तीन चीजें clear हो गई? तो आपको ये मैं बता दूं, दो तरह के यूनिट्स हैं. एक यूनिट्स जो इक्विटी ओरिएंटेड फंड है, उसके लिए 12 महीने शॉर्ट टर्म, मोर देन 12 मंथ्स लॉन्ग टर्म. अदर यूनिट्स 36 months. Shares unlisted 24 months, listed 12 months. Securities listed, I told you, 12 months. Unlisted securities 36 months. Land and building or both 24 months and not 36 months. Clear, sir? Is it clear? Short term है तो आपको पता है दो तरह का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है शेयर में. One is 111A and second is any other. When I come to 111A, what does it say? Where the total income includes any income capital short-term capital gain referred to in section 111A, then such long on which security transaction tax has been paid. There is a short-term capital gain from the transfer of listed share through recognized stock exchange or unit of equity oriented fund through recognized stock exchange. And you have transferred it for period not more than 12 months. You have transferred it after holding it. Then let me tell you, this short-term capital gain on which security transaction tax has been paid will be liable to tax at the special rate of 15% as per section 111A. 111A. And all other short-term capital gain, whether it is on shares or it is units or it is any other thing, what you call other asset, it will be taxable at the normal rate applicable to the assessee. But the special rate is only under section 111 capital A. Am I right, sir? 111 capital A, where the special rate is 15%, provided there is listed share sold through recognized stock exchange, which was held for not more than 12 months, or what I said is you have sold units of the equity oriented fund through recognized stock exchange, only shares and units, and security transaction tax has been paid at that. In the case of shares, security transaction should be paid at the time of purchase, at the time of acquisition, as well as at the time of transfer. In case of equity oriented fund, the STT must have been paid at the time of only transfer, not at the time of purchase. But there is one notification 60/2018, which says there is a possibility that you might not have paid security transaction tax on the shares, like bonus share. Where do you pay security transaction tax when bonus share is issued to you? Where do you pay on right share? So there is a notification which has given you 60/2018, which says even if you have not paid security transaction tax at the time of acquisition, still you will get the benefit of section 111A. But please see the notification number 60/2018. Clear? Clear, sir? Am I right? You are able to understand? So my point is short-term capital gain 111A, long-term capital gain after that. Coming to now, very important issue. 45(3), read with 56-10. What is 45(3)? If any capital asset is brought into the business of the partnership firm or AOP by a partner or a member as capital asset. Suppose I am a partner of a firm. I bring a capital asset in kind as my capital contribution. As my capital contribution, there is a capital gain to whom? To the partner. Similarly, the case of member bringing
any capital contribution in the AOP, 45.3 is applicable. What is 45.3 says? Anybody? What will be the, how would you calculate the capital gain? Anybody who is in front of me, what will be the capital gain? If you bring some capital asset like shares, like building, like any asset into the business of partnership firm as your capital contribution, how would you calculate the capital gain? Tell me. The capital gain is to the partner. What Sir, will be your consideration Sale price? consideration would be book value. The value, it is recorded in the books of account. No book value. No, don't tell me that. Okay. Value recorded in the books of account. Because you may not bring it at book value. You may bring it at higher value. You may bring it at more value. आपने कह दिया बहुत अच्छा, लेकिन फंस गया. अब 56(2)(10 लग गया है. 56(2)(10 क्या कहता है? If you bring any movable property or immovable property, if somebody receives, if a person receive from any other person or person a sum of money exceeding 50,000, वो तो छोड़ दीजिए. Any movable property, number one, without consideration, ये consideration है. Number two, for inadequate consideration. And the difference between the fair market value and the purchase price is less than or more than 50,000. तो वो सारा पैसा टैक्स लग जाएगा. किसको? फर्म को. पहले नहीं होता था, पहले 56(2)(7 होता था या 7A होता था, अब तो 10 आ गया. एनी पर्सन. तो पार्टनर अगर ला रहा है, मेरे शेयर की वैल्यू 5 करोड़ की है, मैं ला रहा हूं अंदर, बुक वैल्यू 5 करोड़ है मेरी, मैं 6 की लाऊं तो 6 पे कैपिटल गेन दूंगा, 5 की लाऊं तो 5 पे दूंगा, वैल्यू रिकॉर्डेड. 4 पे लाऊं तो 4 की दूंगा, 10 पे लाऊंगा तो 10 पे दूंगा. ये तो कैपिटल गेन हो गया. लेकिन अब ये तो था ट्रांसफर पॉइंट ऑफ व्यू, पार्टनर्स पॉइंट ऑफ व्यू. अब 56(2)(10 में आ जाइए. हु इज द रिसिपिएंट ऑफ दिस शेयर? द फर्म. फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन. मेरा वो रिलेटिव नहीं है. फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन. तो जब इनएडिक्वेट कंसिडरेशन से आएगा तो क्या होगा? द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दोज शेयर, द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दोज शेयर minus the value at which you have acquired will be treated as income under the head other sources if that difference exceeds rupees 50,000. ये क्लियर हुआ सर? ये क्लियर हुआ? कभी सभी यही कहते हैं वैल्यू रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. मैं कहता हूं आपने तो बहुत अच्छा बोला, लेकिन आपने सिर्फ 45(3) पढ़ा, आपने 56(2)(10 तो पढ़ा ही नहीं. लेकिन कई मुझे ये भी बहस करते हैं 50C और 45(3) में कौन सा लगेगा? 50C तो प्रॉपर्टी के लिए, 50C और 45(3) में कौन सा लगेगा? आप कहते हैं दोनों स्पेशल सेक्शन है. मैं कोई सा लगा ले भाई, 50C तो लगाएगा 45(3) तो क्या फर्क पड़ेगा? वहां तो 56(2)(10 लग जाएगा. फर्म को तो टैक्स देना पड़ गया, तो फायदा क्या होगा? मुझे बता दीजिए, बता दीजिए क्या फायदा होगा? अब वैल्यू रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ले आए, मर गया. अब मर गए. क्यों मर गए? क्योंकि आपको 56(2)(10 फर्म को देना पड़ेगा. ये मेरी बात समझ में आ रही है सर? नहीं आ रही? ये कोई डिफरेंस करे, कुछ के दिमाग में ये डाउट है तो सवाल पूछे, क्योंकि ये लोग बड़े परेशान हैं लोगों से, और लोग कहते हैं ये कैसे होगा. सवाल पूछ रहे मेरे से कि भैया 56(2)(10 आ चुका है और 56(2)(10 में इंडिविजुअल HUF नहीं है. एनी पर्सन रिसीव फ्रॉम एनी अदर पर्सन और पर्सन. तो 45(3) रेड विद 56(2)(10 आप बेवकूफी करेंगे और वैल्यू रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ले जाएंगे. पार्टनर को तो टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन फर्म को तो लग जाएगा. फर्म को तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज लग जाएगा ना फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन. लोग हैरान हैं, मतलब फेस में कुछ इंप्रेशन मैं देख रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा उनके. ये वो देख रहे हैं कि यार पता नहीं ये ठीक है, तो बोलो ना, डिस्कस कर लो मेरे साथ. कोई डाउट है तो पूछो कि मैं गलत कह रहा हूं कि अच्छा कह रहा हूं. बोलो, कोई भी डिस्कस करना है ये पॉइंट. तो ये मैं ध्यान रख लेना कभी भी. हाँ जी, बोलो बोलो बोलो. सर, क्या पार्टनर को सेक्शन 50C के तहत कैपिटल गेन लगेगा और फर्म को 56(2)(10? नो, 50C तो आपको पता किसका है, 50C तो पता है, लेकिन 50CA आ गया. शेयर का भी 50CA आ गया है, अनलिस्टेड शेयर का. मैं अनलिस्टेड लिस्टेड की तो बात ही नहीं कर रहा. मैं तो कहता हूं आप 45(3) लगा लो. चलो 50C छोड़ दो, 50CA छोड़ दो, आपकी बात मान लेता हूं. तो आप क्या करेंगे?
वैल्यू रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। लेकिन 56(2)(10 तो लग जाएगा दोनों केस में, चाहे बिल्डिंग लाओ, चाहे लैंड बिल्डिंग लाओ, चाहे शेयर लाओ। शेयर मूवेबल है, वो इमूवेबल है। बात समझ में आ गई सर? मानते हो कि नहीं मानते? यस सर। एक को तो लग गया ना, दूसरे को ना लगा, लेकिन उसको तो लग गया, तो फायदा क्या हुआ? ट्रांसफर को नहीं लगा, ट्रांसफरी को लग गया, ट्रांसफरी को लग गया। हाँ हाँ देखो, मैं कह रहा हूं चेक करो, मेरे से बात करो, प्लीज डिस्कस करो। यही इशू के लिए तो मैं लेक्चर ले रहा हूं, नहीं तो मुझे लेक्चर क्यों लेना है? सर तो अगर आप रोज डील करते हैं। सर अगर वो शेयर्स या इमूवेबल प्रॉपर्टी स्टॉक इन ट्रेड करके हेल्ड की है पार्टनर ने, और फिर वो फर्म में इंट्रोड्यूस कर रहा है अगेन एज अ स्टॉक इन ट्रेड। दो चीजें पहले बता देना, जब आप स्टॉक इन ट्रेड लेके आए हैं तो वो 50-45(3) तो लगेगा ही नहीं। 45(3) तो लगेगा ही नहीं, लगेगा ही नहीं, वो तो 45(3) लगेगा ही नहीं। अब नहीं किस लगेगा। वैल्यू पे लाएंगे? जीएसटी की भी देख लेना, जीएसटी अलाउ करता है कि नहीं करता, पहले वो भी ध्यान रख लेना, क्योंकि जीएसटी शेयर में नहीं लगता, बिल्डिंग में तो लगता है, वहां लगता है। फिर 43CA वहां पर है, बराबर 43, वहां 43CA है, रेड विद 56(2)(10। अब फिर चुप हो गए। अरे 43CA तो है ना, कि 43CA में लाना पड़ेगा, यू कांट ट्रांसफर मोर देन लेस देन दैट, क्योंकि 45(3) लगेगा नहीं, 43CA लग जाएगा। मुझे कुछ ना कहना, मैं आपको चीजें बता रहा हूं, क्योंकि ये गलती हम अधिकतर कर जाते हैं, क्योंकि हम 45(3) पढ़ रहे हैं और कई सालों से पढ़ रहे हैं, ये बगैर नहीं देखे कि 56(2)(10 ने तो सब कुछ बदल दिया, नक्शा ही बदल दिया है। क्लियर हो गया? एनी डाउट? एनीबडी वांट्स टू आस्क? एनीवन वांट्स टू आस्क? आई एम कमिंग फर्दर। 45(2) मैंने कर दिया था, 45(3) आज कर दिया, 45(4) भी है। अगर एक कैपिटल एसेट है और आप रिटायर हो रहे हैं या डिसोल्यूशन है और वो कैपिटल एसेट आपको इन काइंड फर्म दे देती है टू द पार्टनर, तो उस केस में फर्म को टैक्स लगता है। फर्म विल हैव टू कैलकुलेट द कैपिटल गेन on the face value, fair market value of those shares or fair market value of this asset. ये मालूम है ना 45(4) में, whenever there is a dissolution and asset in kind is distributed to the partners or by AOP to the members, or there is a retirement and you distribute asset in kind, मैंने capital नहीं कहा, asset in kind ले गए, शेयर आपने दे दिए पार्टनर्स को, वो कैपिटल एसेट है, शेयर दे दिए, दे दो, टैक्स लग जाएगा। किसको? फर्म को। किस वैल्यू पे? फेयर मार्केट वैल्यू पे। और आपको भी तो लगना है 56(2)(10, तो फेयर मार्केट वैल्यू पे ही दोगे। आप उससे कम पे दोगे तो आप फंस जाओगे। तो ये भी क्लियर हो गया 45(4). कोई डाउट, कोई शक शुबा तो मुझसे पूछ लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। कोई दिमाग में परेशानी है तो मुझे आप पूछ लीजिए। सर 50C और 45(4) में क्या प्रीवेल करेगा? 50C और 45(4) में 45(4) फेयर मार्केट वैल्यू कहता है, तो आजकल उन्होंने फेयर मार्केट वैल्यू की डेफिनेशन दे दी है, इट विल बी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इफ दिस इज देयर। वो तो आ गया लॉ में, फेयर मार्केट वैल्यू विल बी द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। अगर आप प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, अगर आप प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहे तो बात अलग है। नहीं, प्रॉपर्टी की है। हाँ, तो फिर वो तो बोल दिया उन्होंने, आज इस साल अमेंडमेंट आ गई ना फाइनेंस एक्ट 20 में, कि दैट विल बी टेकन एज द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। इफ देयर इज नो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू देन you will have to take a certificate from the registered valuer, otherwise stamp duty value। वो भी तो आ गया, वो तो आ गया सर, वो तो आ गया, छोड़ नहीं रहे वो। ये मत सोचना प्लानिंग बंद कर दो, ये मैं आपको बता दूं, वो जमाने चले गए और बाकी जमाने तो फेसलेस ने खत्म कर दिए। अब तो भूल जाओ, अब सीधे सीधे बन जाओ, वक्त की नजाकत समझो। सबका मैं आपको बता दूं 360 डिग्री प्रोफाइल बन गया है, 360 डिग्री प्रोफाइल। आप मुझे अपना पैन नंबर दो, मैं आपको बता दूंगा कि आपके क्या क्या असेसमेंट हो चुकी है, क्या पेंडिंग है। वो तो बड़ी छोटी सी बात है, मैं बता दूंगा आपके पास कितने शेयर्स हैं, आपके पास कितने वो हैं बैंक अकाउंट हैं, आपके पास कितनी एफडीआर हैं, आपके पास वो एफडीआर भी बता दूंगा जो 50,000 से नीचे, जिसके ऊपर आप टीडीएस नहीं कटता, वो भी बता दूंगा। आपने कितनी बार फॉरेन ट्रेवल किया है, आपके पास कितने यूनिट्स हैं,
अरे आपके बारे में तो उतना मालूम है जितना तो आपको भी मालूम नहीं होगा। मेरे साथ हुआ, मैं जब लॉ बना रहा था, इनकम टैक्स को रीराइट कर रहा था। मैंने तो इनकम टैक्स को रीराइट किया हुआ है ना, ऑलरेडी अब कर दिया है, लेकिन वो अभी तक नया लाया नहीं रहे। तो मैंने जब लाया तो कह रहा जी हमने प्रोफाइल बनाया। मैं कहा दिखाओ। उन्होंने मेरे साथ पैन नंबर मांगा, मैंने पैन नंबर दिया। पहले पेज आया जिसमें मेरा नाम, एड्रेस, ये वो तो डेटा होती है, पैन नंबर, आधार नंबर, सब कुछ था, कोई बात। नेक्स्ट आया, मेरी कितनी असेसमेंट कंप्लीट हो चुकी है, क्या रिफंड है, क्या वो है, वो तो हम अभी भी देख लेते हैं अपनी साइट पे जाकर, क्या रिफंड आया, कितना आया, क्या पेंडिंग है, क्या डिमांड है, वो आ गया। तीसरी उन्होंने खोला, आपके कितने बैंक अकाउंट हैं, सबका बैलेंस 31 मार्च का था, ऑल बैंक अकाउंट्स डिटेल, इट वाज देयर। मैंने कहां से लिया? कहता आपके रिटर्न में बैंक अकाउंट आते हैं, हम उससे डिटेल ले लेते हैं। मेरी कितनी एफडीआरस हैं, सारी डिटेल। मैंने कहा कहां से आई? वो कहता चिंता मत करो, आपके पास टीडीएस कटा है तो भी क्वार्टरली स्टेटमेंट आई है, वहां से टीडीएस से ले लिया है, और वो नहीं कटा है तो भी वहां जाती है 206AA में इंफॉर्मेशन, हमने वहां से ले ली है। आपके पास कितने यूनिट्स हैं, वो यूनिट बताने लगे तो एक यूनिट आया जो मुझे भी नहीं पता था, 2 लाख रुपए की वैल्यू थी। मैंने कहा ये तो मैंने ली ही। वो देखा 20 साल पुराना था, ग्रोथ स्कीम थी, मुझे भूल गया, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, और मुझे पता ही नहीं, मेरा पैन नंबर तो उस वक्त मांगा नहीं था, और मेरा एड्रेस चेंज हो गया था। तो आती होगी चिट्ठियां वहां पर। मैंने कहा जी नोट करने दो, मैंने वही नोट कर लिया, और नोट करके अगली बार ठीक कराया 2 दिन बाद जाकर कि लाओ भैया ये मेरा यूनिट ट्रस्ट आपके पास पड़ा है 2 लाख का, यूनिट ट्रस्ट था तब तो था ही नहीं और कोई चीज, तो मैंने को वो मिल गया 2 लाख। फिर उन्होंने मुझे दिखाया आप कितनी बार फॉरेन ट्रेवल करने गए। मैंने देखा तो सारी डिटेल फॉरेन ट्रेवल की डिटेल थी। मैंने कहा सर आपको एक चीज तो पता लग गई, फॉरेन ट्रेवल करने गया, इंडियन ट्रेवल। कहता आपके बारे में तो वो भी पता है हमें। मैं कैसे पता है? कहता आप 150 बार गए थे पिछले साल ट्रेवल करने। मैं ना 240 बार। मैं 240 बार वो कैसे? कहता 120 टाइम आप गए और 120 टाइम वापस आए। मैं सर आपको क्यों ये पता लगा? कहते हमने देखा ये आपका बड़ा फ्रीक्वेंट ट्रेवल है, इनका चेक करो कि क्या है। मैं कहा मैंने तो कभी 1 रुपया भी नहीं खर्चा, सारे तो कभी नासिक वाले बुला लेते हैं, कभी मुंबई वाले बुला लेते हैं, कभी चेन्नई वाले बुला लेते हैं, कई बार तो अब्रॉड भी गया, तो क्या करूं? कहता वो हमें नहीं मालूम है, हम आपकी डिटेल बता रहे हैं, आपके बारे में ये इंफॉर्मेशन है। मैं कहा मर गए सर। मैं कहा बाकियों को भी रखते हो? कहता अगर ज्यादा ट्रेवल नहीं हो इंडिया का तो वो नहीं रखते, फॉरेन ट्रेवल की तो पूरी डिटेल है। मैंने कहा चल सर मैंने दिल्ली न्यूयॉर्क दिल्ली की टिकट ली, और न्यूयॉर्क के बाद मैं बाहर घूमने चला गया, कहीं कैलिफोर्निया चला गया, लास वेगास चला गया, इधर चला गया, आपको कैसे पता लगेगा? वो तो टिकट मैंने वहां जाके ली है। कहते इंतजार करो। मैं क्या इंतजार करूं? कहते सुनिए आपको आप ही खुद बता देते हैं। मैं कैसे? कहता आपने अपने फेसबुक में डाल दिया है कि आप वहां पर फेसबुक में डाला कि आप यहां पर हैं, हम वहां लिख देते हैं आई लाइक इट, वो लाइक करके मेरे में डालती है। तो फेसबुक से भी वो इंफॉर्मेशन ले रहे हैं आपके बारे में। अरे आपके बारे में वो लेडीज जो है शादी में जाती है लोडेड विद ज्वेलरी, और फिर फोटो डाल देती हैं, आजकल हम ये शादी अटेंड करी या मैंने ये प्रोग्राम अटेंड किया। वो कहते हैं वी लाइक इट मोर। वो भी लाइक करके उन्होंने नोट कर लिया कि आपके पास क्या क्या ज्वेलरी है, आपके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है। अब तो थोड़े दिन रुक जाइए, आपका कैपिटल गेन भी कैलकुलेट होके आएगा, आपको कहना पड़ा। और अभी देखिए 80G की डिडक्शन जो आपको मिलेगी आगे से, इस साल छोड़ दो अगले सालों से, तो तभी मिलेगी जब आपका नाम होगा वहां पर ऑटोमेटिक, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगी 80G। अरे थोड़े दिन रुक जाओ मेरे सर, ऐसा आएगा वो कहेंगे ये रही आपकी इनकम टैक्स रिटर्न, साइन कर दो, हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन है आपके बारे में। ये इलेक्ट्रॉनिक है। मैं आपको बता दूं हेरा फेरी करने के काम खत्म। और दूसरी बात मैं आपको वार्न कर रहा हूं सर, बुरा ना मानना, अगर किसी क्लाइंट का आपका सर्च हुआ तो आपका सर्वे जरूर होगा। ये इंटरनल इंस्ट्रक्शन है कि सीए का सर्वे करो और उसका लैपटॉप और क्या वो पकड़ लो। क्या पकड़ लो? लैपटॉप या कंप्यूटर पकड़ लो, सब कुछ मिल जाएगा वहां पर। कितनी बार उन्होंने डिलीट किया, कितनी बार ऐड किया। लोग कहते हैं हम तो एक बटन दबाते हैं सब खत्म हो जाता है, कुछ भी खत्म नहीं होता। देख लिया ना रिया चक्रवर्ती का केस, देख लिया ना। कौन सा? अभी तो देख रहे हो आज बैठी हुई दे रही है पादुकोण,
वो भी तो यही दे रही है, दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, ये सारों के सारे का इंफॉर्मेशन आ गई बाहर। आप तो सोच रहे थे वो तो हमारा उसमें है, उसमें व्हाट्सएप में, और व्हाट्सएप तो बहुत सेफ है। देख ली सेफ्टी ऑफ व्हाट्सएप, देख लिया ना, सब कुछ आ गया। और आपका कंप्यूटर में कोई डिलीट नहीं होता है कुछ भी। आपसे यही सवाल पूछेंगे, ये बताओ ये चेंज क्यों किया। सर हमने बहुत हार्ड वर्क किया है, बड़े हार्ड वर्क करके सीए पास करी है। कोई ये नहीं कह सकता बगैर हार्ड वर्क के सीए पास हो गया है। ये काम बंद कर दो। अपने कंप्यूटर में कोई चीज, बारूद है आपका कंप्यूटर, आपका लैपटॉप पूरा बारूद है, सिर्फ उस क्लाइंट के लिए नहीं, सारे का सारा ही बारूद है। आपका इंफॉर्मेशन भी वही पड़ी हुई है। बंद कर दो। उसका हार्ड डिस्क निकालकर तोड़कर जमीन में गाड़ दो, उसके ऊपर लैंड माइन बिछा दो। आगे से गलत काम मत करना, नहीं तो फंस जाओगे। हाथ जोड़ के विनती है, अब तो ऑनेस्ट आदमी करना ही पड़ेगा, मजबूरी है। ये कंप्यूटर ने बेड़ा गर्क कर दिया ये, और बाकी तो फेसलेस ऐसे ही आ गया है। तो कोई गलत काम नहीं करना। मैं तो 100 चूहे खा के हज में जा चुका हूं। अगर आपने 98 चूहे खाए हैं तो 2 और खा लेना, उससे ऊपर मत खाना, फंस जाओगे। मैं पहले वार्न कर रहा हूं, मत करना। जमाना बदल गया, अब तो सारा ऑनलाइन चीजें हैं, एक एक इंफॉर्मेशन आपके ऊपर है। अरे मैं गया सर क्रोमा के शोरूम में, कोई चीज लेने गया, छोटी सी चीज 2000 रुपए की थी, सॉरी चार्ज बैटरी वो था, पावर बैंक। निकला तो उसने कहा जी आपका टेलीफोन नंबर दे दो। मैंने बेवकूफ ने टेलीफोन दे दिया, और उसने कहा सर आपका आईपैड कैसे काम कर रहा है, आपका आईप्रो कैसे काम कर रहा है, आपका आईफोन कैसे काम कर रहा है। मैं तेरे से तो कभी खरीदा ही नहीं है। कहते हैं सर क्रोमा के शोरूम में इंडिया में कहीं से भी खरीदा होगा ना, उसकी डिटेल हमारे पास है, ये लीजिए। मैं कब मर गए, टेलीफोन से ही पता करा दिया सारी डिटेल। अरे आपका फ्लिपकार्ट, आपका अमेज़न से जो सामान खरीदते हैं पूरी डिटेल उनके पास है। ये तो छोड़ दो, डोमिनी का पिज्जा भी जो घर पे मंगाते हैं उनके पास पूरी डिटेल है, आपके कितने घर पिज्जा डिलीवर हुए पिछले साल। वो कंप्यूटर है, कंप्यूटर तो एक एक इंफॉर्मेशन रखता है। तो समझ जाना, अपने क्लाइंट को समझा देना, कोई गलत काम नहीं करना है। जमाना बदल गया, और बाकी तो बदल दिया फेसलेस में। और ये मत सोचना कि मोदी जी नहीं रहेंगे, मोदी जी तो दोबारा आएंगे ही आएंगे। फेसलेस अपील भी आ गई है, और बाकी भी फेसलेस सब कुछ होने जा रहा है। आपने अमेंडमेंट नहीं पढ़ी, जो नई अमेंडमेंट आई है, हर चीज फेसलेस हो जाएगी। अपने ही दफ्तर में बैठो, बाहर मत निकलो। लॉकडाउन हो गया परमानेंट लाइफ में, कि आप निकल ही नहीं सकते। लाइफ का परमानेंट लॉकडाउन कर दिया उन्होंने आपका। अपने ऑफिस में बैठ के सारे कुछ करना, इनकम टैक्स का भी, जीएसटी का भी। अभी तो जीएसटी से लिंकेज हो रही है, पहले एमसीए से लिंकेज करी, अब जीएसटी से लिंकेज हो जाएगी। तो मैं कह रहा हूं प्लीज बी केयरफुल, कोई गलत काम नहीं। और हम तो मेहनत करने वाले आदमी हैं, हमने बड़ी मेहनत करके सीए पास करी। कोई नहीं कह सकता, ये डॉक्टर भी पास हो सकता है कैपिटेशन देकर, कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन हम नहीं हो सकते। हमने तो मेहनत करी है, हम मीन्स आप सब ने करी है। वो अलग बात है, कोई 1 बार, कोई 2 बार, कोई 4 बार में पास हुआ, लेकिन हुआ मेहनत से ही है, हुआ मेहनत से ही है। और इसलिए मैं कह रहा हूं प्लीज फॉर गॉड से अब अपने आप को बदल लीजिए। फेसलेस भी हो गई और ये इंफॉर्मेशन भी पूरी है, अपने लैपटॉप कंप्यूटर ठीक कर दीजिए। मैं बाद में मुझे मत कहना, मैं सबको वार्न करे जा रहा हूं। आइए वापस आगे बढ़े। हम कह रहे थे शेयर्स के बारे में। अब यह एक बोनस शेयर्स है, तो बोनस शेयर अगर आप बेचते हैं तो 2 पॉइंट आते हैं कि उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होती है बोनस शेयर की। तो मुझे बताइए बोनस शेयर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है? आपने तो कोई प्राइस नहीं दी, so what will be the cost of acquisition bonus share? Anybody can tell me? Anyone? बोनस शेयर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होती है? 0. आप गलत कह रहे हैं। If the bonus shares are allotted before 1st April 2001, it is market value on 2001. If bonus shares are allotted to you after 1/4/2001, then it is 0. ये भी तो सोच लो सर, आपको ये गलत नहीं है। बोनस शेयर को 0 मत समझो, ये 0 नहीं है। allotted before 1st April 2001, fair market value on 1st April 2001,
allotted after 1st April 2001, then only it is 0. Clear? 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 वो भी 0 नहीं है, वो भी 0 नहीं है। अगर आपके लिस्टेड शेयर हैं और आपने 31 जनवरी 2008 के बाद बेचे, वो भी 0 नहीं है। क्या है? फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 31 जनवरी 2018। तो 0 कैसे कह दिया सर? इवन बोनस शेयर जिसकी कॉस्ट 0 है उसको भी टैक्स, उसके भी 31 जनवरी का ले लिया फेयर मार्केट वैल्यू। अगर वो 31 जनवरी 2018 वो लिस्टेड है तो समझ में आ रहा है सर? फॉर लिस्टेड बोनस शेयर अलॉटेड आफ्टर 1st April 2001, you can take the market value on 31st January 2018 if you have sold it after 31st January 2018, because before that तो वैसे ही कैपिटल गेन माफ होता था 1038 में अगर लिस्टेड शेयर थे तो। वो तो कैपिटल गेन माफ ही होता था, चाहे वो बोनस शेयर हो चाहे वो कोई भी शेयर हो। लेकिन उन्होंने बोनस शेयर के लिए भी जो लिस्टेड है कह दिया अब मार्केट वैल्यू 31 जनवरी 2018 की लेने हैं, तो एकदम 0 मत कहना। हमें कोई याद होता है ना, हम मुझे आता है तो हम जल्दी बोल पड़ते हैं। इसको सोच के बोलना है, हर चीज सोच के बोलनी। क्योंकि मैंने सवाल पूछा तो जरूर उसमें कोई बाहर घुंडी होगी, तभी तो पूछा। सिंपल होता तो मैं पूछता ही क्यों, मैं बात ही क्यों करता। सो 3 इशू बोनस शेयर में आ गए। अलॉटेड बिफोर 2001 मार्केट वैल्यू, allotted after 1st April 2001, nil. Now if it is listed, sold through recognized stock exchange after 31st January 2018, fair market value as on 31st January 2018. Clear sir? Clear sir? No problem? Clear हो गया? आइए, राइट शेयर की क्या कॉस्ट है? What is the cost of acquisition of right share and the period of holding of right share? हाँ सॉरी आपने बोनस शेयर की बता दिया। पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से है? पीरियड ऑफ होल्डिंग फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। लेकिन आपके पास ओरिजिनल शेयर्स भी हैं और आपको बोनस शेयर भी मिले, तो क्या होगा? ओरिजिनल शेयर की पीरियड ऑफ होल्डिंग वही होगी जो जहां से वो लिए हुए हैं। बोनस शेयर से कोई लेना देना नहीं है। बोनस शेयर की अपनी पीरियड ऑफ होल्डिंग, ओरिजिनल शेयर की अपनी। ये भी क्लियर है? पहले तो प्रोपोर्शनेट करते थे, वो जमाने चले गए। ओरिजिनल शेयर की पीरियड ऑफ होल्डिंग करेक्ट है। बोनस शेयर की राइट शेयर, आपको राइट का शेयर का ऑफर आया, आपके पास राइट टू रिनाउंसिएशन भी है, आपने रिनाउंस कर दिया तो क्या होगा? रिनाउंस नहीं किया, अप्लाई कर दिया तो क्या होगा? पार्टली अप्लाई कर दिया, पार्टली रिनाउंस कर दिया। अभी आए थे ना रिलायंस के शेयर, उसके ऊपर रिनाउंसिएशन भी था। रिनाउंसिएशन आप बेच भी सकते थे, आपने बेचे। उसमें वो भी था कि आप भी ले सकते हैं, और आपसे तो पार्टली पेड शेयर मांगा उन्होंने। तो मेरा पॉइंट है कि अगर राइट शेयर है तो पहले तो पॉइंट है अगर आप अप्लाई करते हैं तो राइट शेयर की कीमत वही होगी जो आपने एप्लीकेशन में वो दिया। दैट विल बी एंड द पीरियड ऑफ होल्डिंग विल बी डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ राइट शेयर। और उस केस में भी अगर वो लिस्टेड है और 31 जनवरी 2018 है तो आप फेयर मार्केट वैल्यू ले सकते हो, वो पुरानी वैल्यू लेने का कोई मतलब ही नहीं। क्लियर है? क्लियर है सर? अब आपने राइट को रिनाउंस कर दिया था तो क्या होगा? राइट तो रिनाउंस करना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। जितना आपको पैसा मिला, क्योंकि कॉस्ट तो उसकी 0 है, रिनाउंसिएशन जो किया, जो पैसे आपको रिनाउंसिएशन में मिले वो आपकी क्या मानी जाएगी? कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब जिसने वो राइट खरीदा उसकी क्या कॉस्ट होगी? 2 कॉस्ट होंगी। एक तो अमाउंट पेड टू द कंपनी प्लस अमाउंट पेड टू यू फॉर परचेज ऑफ राइट। फॉर परचेज ऑफ राइट, आपका राइट का परचेज किया, आपने 60 रुपए पर शेयर दे दिया, 60 रुपए वो, और फिर अप्लाई किया 400 रुपए पर शेयर, तो 460 रुपए कॉस्ट होगी। ये क्लियर हो गया? लेकिन फ्रॉम विच डेट? Not from the date of purchase of right, from the date of allotment of share. ये क्लियर हुआ सर? राइट शेयर, ये भी आपको क्लियर कर दूं। मैं शेयर ट्रांजैक्शन कर रहा हूं लेकिन ये भी क्लियर कर दूं, राइट शेयर। क्लियर? राइट शेयर,
राइट शेयर भी कर दिया, बोनस शेयर भी कर दिया, बोनस शेयर भी कर दिया, राइट शेयर भी कर दिया। अब है आपके पास प्रेफरेंस शेयर थे, कंपनी ने कन्वर्ट कर दिया इस प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर्स में। इज इट ए ट्रांसफर? सेक्शन 47(10)(b सेज इट इज नॉट ए ट्रांसफर। ये ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। पहले माना जाता था, सारा भाई का जजमेंट थी कि माना जाता। अब क्या है? प्रेफरेंस शेयर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर इज नॉट ए ट्रांसफर, नो कैपिटल गेन, नथिंग। जब इक्विटी शेयर बेचोगे तो कॉस्ट क्या होगी? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। पीरियड होल्डिंग क्या होगा? जिस दिन से प्रेफरेंस शेयर आपके पास थे। आप बात को समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? आप बात समझ रहे हैं? आपके पास प्रेफरेंस शेयर थे, अगर तो रिडीम कर दिए गए वो तो बात अलग है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर के बदले आपको इक्विटी शेयर दे दिए गए, तो लॉ कहता है 47(10)(b) में दिस ट्रांजैक्शन इज नॉट रिगार्डेड एज ए ट्रांसफर। फिर कहता है जब बेचोगे तो कि कॉस्ट क्या होगी? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होगा? वही वाला जो प्रेफरेंस शेयर का था, वहां से शुरू करके तो माना जाए। ये क्लियर हुआ प्रेफरेंस शेयर का? क्लियर हुआ? आगे बताऊं। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स एक होते हैं, एक कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कन्वर्टेड इनटू शेयर होते हैं ना। इज इट ए ट्रांसफर? इट इज नॉट ए ट्रांसफर, इट इज नॉट ए ट्रांसफर। अगर आपके डिबेंचर्स के बदले जब शेयर मिले तो ये ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होगा? कॉस्ट क्या होगी? पहले कुछ और था, अब रूल 8A आ गया है। रूल 8A वो कहता है कॉस्ट होगी रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स। अगर सारे डिबेंचर्स को शेयर में कन्वर्ट कर दिया तो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स। लेकिन ये भी तो हो सकता है 500 डिबेंचर 100 रुपए के थे, आपकी उसकी वैल्यू 50 रुपए कर दी, 50 के बदले शेयर दे दिए, 4 शेयर, तो फिर 4 शेयर जो आधी कॉस्ट कम हुई ना, तो वही कॉस्ट मानी जाएगी किसकी? शेयर की। रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डिबेंचर। और या डिबेंचर पूरे ही खत्म कर दिए तो वैल्यू ऑफ डिबेंचर। पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या माना जाएगा? डिबेंचर का पीरियड भी लिया जाएगा और फिर आप कैपिटल गेन निकालेंगे। पहले ये नहीं था, ये रूल 8A आ गया है कि debentures converted into shares, it is not a transfer. Since it is not a transfer, whenever you are going to sell that share, the cost will be the cost of the debentures, or reduction in the value of debentures. Period will be the period for which the debentures were also held. ये कोई पूछना चाहते हैं तो पूछिए सर, मोस्ट वेलकम। आप सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि कई चीजें आपको नई नजर आ रही हैं। वैसे नई नहीं है, लॉ में लिखी हुई है। मैंने तो कुछ वो लॉ पढ़ा रहा हूं, मैं अपने घर से कुछ नहीं ला रहा, लेकिन कईयों ने पढ़ी ही नहीं, क्योंकि वैसे भी हमें इनकम टैक्स पढ़ने का शौक नहीं है। पढ़े भी तो समझ में आता नहीं है, पढ़ के करेंगे क्या? जब सीए कर रहे थे तब दिल नहीं करता था एक्ट को पढ़ने का, जब सीए कर लिया तो वैसे ही एक्ट पढ़ने का दिल नहीं करता। कोई चीज पढ़ने का दिल नहीं करता, बहुत हार्ड वर्क कर लिया, और पढ़ भी ले तो समझ में नहीं आता, पढ़ भी ले तो समझ में नहीं आता। मुझे याद है नासिक में था, कौन नाम था मैं याद भूल गया, उन्होंने मेरे को कहा सर पढ़ने का मजा नहीं आता, नाम मैं भूल गया। मैंने कहा यार एक सेक्शन रोज पढ़ लिया कर। कहता सर क्या फायदा, समझ में तो आता नहीं। मैं पढ़ ले यार। कहता क्यों नहीं समझ में आता? कहता सर सेक्शन, सेक्शन के नीचे सब सेक्शन, सब सेक्शन के नीचे क्लॉज, क्लॉज के नीचे क्या होता है? सब क्लॉज, सब क्लॉज के नीचे क्या होता है? प्रोविजन। बताएगा? है जी, सब क्लॉज के नीचे क्या है? आइटम, आइटम, हाँ, ये सुन लिया मेरा लेक्चर इन्होंने, आइटम यहीं पे मेरा लेक्चर सुना है। ऐसे नहीं है आइटम, ये गारंटी दे रहा हूं। और आइटम के नीचे सब आइटम, और सब आइटम के नीचे प्रोवाइडेड दैट, ये फर्स्ट प्रोवाइजो होगा। नेक्स्ट होगा प्रोवाइडेड फर्दर दैट, ये सेकंड प्रोवाइजो होगा। फिर लिखेगा प्रोवाइडेड आल्सो दैट, ये थर्ड प्रोवाइजो होगा। फोर्थ डालना है तो प्रोवाइडेड आल्सो दैट, पांचवा डालना है तो प्रोवाइडेड आल्सो दैट, छठवां डालना है तो प्रोवाइडेड आल्सो दैट। 20 प्रोवाइजो है सेक्शन 23C। 20, पहला प्रोवाइडेड दैट, सेकंड प्रोवाइडेड फर्दर दैट, फिर डालते जाओ जितने डालने, प्रोवाइडेड आल्सो दैट, प्रोवाइडेड आल्सो दैट, प्रोवाइडेड आल्सो दैट, प्रोवाइड। जैसे आप करते हो आई आल्सो थैंक, आई आल्सो थैंक, आई आल्सो थैंक, ये भी कह रहे हैं प्रोवाइडेड आल्सो, प्रोवाइडेड आल्सो, प्रोवाइडेड आल्सो। और फिर उसके बाद भी खत्म नहीं होता, नीचे एक्सप्लेनेशन लिखी है। एक्सप्लेनेशन नंबर 1,
सेक्शन नंबर 2, अरे सर फुल स्टॉप ढूंढ रहे हो, कॉमा ही 6 लाइन के बाद आता है, कौन ये पढ़ेगा लॉक? हमने जो नया नाव बनाया है उसमें कोई प्रोवाइजो डाला ही नहीं, हमने तो डाला ही नहीं, बाद में डलेगा ना, अभी क्या डालने की जरूरत है? तो ये है सर, कौन पढ़े? मैंने कहा यार पढ़ ले एक सेक्शन, उसका 4 घंटे बाद फोन आ गया, क्या हुआ सर? एक सेक्शन पढ़ा 4 घंटे लग गए। चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 घंटे लगे, पढ़ तो लिया। कहता सर सुन तो लो, उस लास्ट लाइन में लिखा था इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर असेसमेंट ईयर 2010-11। मर गया सर, मेरे पढ़ के क्या फायदा हुआ? मैंने कहा मेरे से पूछा था कैसे पढ़ना है, अगली बार जब भी इनकम टैक्स पढ़ना पहले लास्ट लाइन देख लेना, पता नहीं वो एप्लीकेबल भी है कि नहीं है, हमें तो पता भी नहीं है कि वो सेक्शन है कि खत्म हो चुका है। तो समझ में आया सर, ये है हमारा इनकम टैक्स एक्ट, तो क्या करें? तभी तो मैं कह रहा हूं बहुत मुश्किल काम है ये, यही तो है, रोज आना नई नई चीजें आ जाती, समझ में नहीं आता, ऐसा पागल बनाते हैं, उनको खुद नहीं पता। 206C1H आ गया, वो जो TCS कलेक्ट करना है 50 लाख के ऊपर 1%, उनको खुद ही नहीं पता कि 50 लाख का कैसे कैलकुलेट करना है, उनको खुद ही नहीं पता कि GST लेस करना है कि नहीं करना, क्योंकि एक आदमी GST का माल बेच रहा है, वो 5% GST वाला भी है, 12 वाला भी है, 18 वाला भी है, और उसको पेमेंट आ गई 10 लाख रुपया इन अकाउंट, तो कौन सी GST लेस करे? 5 वाली, 10 वाली, 12 वाली, 18? वो तो पागल हो जाएगा, वो तो पागल हो गया, हो क्या जाएगा? 1 अक्टूबर से पागल होना ही होना है, बताया ही नहीं। और सेल की कोई वैल्यू ही नहीं है, कंसीडरेशन से है। अरे कंसीडरेशन कौन सी लेनी है, पुरानी सेल की, नई सेल की? कुछ बताइए, दिमाग खराब कर दिया। और वो रिकवर कैसे करना है TCS? क्या बिल में डाल सकते हैं? बिल में तो डाल ही नहीं सकते, वो तो जब पेमेंट आएगी तब कलेक्ट करना। मेरे तो समझ में आ नहीं रहा, आपको समझ में आया तो मुझे भी समझा देना। ये लॉ बनाते, मैंने उसको टेलीफोन किया, मैं तो रोज ही करता हूं, मैं ये क्या लॉ बना दिया? कहता हमें कौन सा समझ में आया है, देखते हैं क्या करना है। मैं कहा मरवा दोगे तुम तो यार, ये क्या लॉ बनाते, सोच के तो बनाया करो, हर रोज चेंज कर देते हैं उसको। समझ में आ गया सर? 206C1H आ रहा है 1 अक्टूबर को, मुझे मत कहना, मुझसे मत पूछना, मैं तो 0.1 GST पे भी काट लूंगा, मुझे रिस्क नहीं लेना है, मुझे रिस्क नहीं लेना, मैं तो कलेक्ट कर लूंगा, क्योंकि बाद में कह देगा 5 वाला, 10 वाला, 18 वाला, मुझे क्या पता। अगर एक ही आइटम बेचता हूं तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिफरेंट आइटम, डिफरेंट रेट, तो मुझे क्या मालूम कि ये अकाउंट पेमेंट आई है, कौन से बिल की आई है और कितने अमाउंट की आई है, ये भी तो देखना है। और फिर मेरा अगर ये 1 अप्रैल से वो भी गिनना है कितना पैसा आ चुका है, और 1 अक्टूबर के बाद कितना आएगा, उसके बाद ही तो 50 के ऊपर पे तो काटना है, कलेक्ट करना है। कलेक्ट करने के लिए डेबिट नोट देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, हमें तो यही नहीं पता लगा। अबे क्यों मरवा रहे हो यार हमें, क्या चाहते हो? 0.1% के लिए हमारे तो बेड़ा गर्क कर दिया ना आपने, ये समझ में नहीं आती क्या कर रहे हैं। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते। अब मैं पहले डेरिवेटिव, 2 तरह के डेरिवेटिव है। हाँ जी, बोलना चाहते हैं? कुछ बोल रहे हैं, कुछ बोलिए बोलिए सर, कुछ पूछना चाहते थे कोई? सर किसी का बाय मिस्टेक हो रहा था। चलिए कोई बात। 2 तरह के डेरिवेटिव हैं, एक कमोडिटी डेरिवेटिव, एक शेयर्स के डेरिवेटिव। आपको पता है दोनों अब बिजनेस इनकम मानी जाती है। यू कैन नॉट बाई डेरिवेटिव, यू कैन डू इट ओनली थ्रू स्क्रीन बेस्ड है, ओनली ऑनलाइन। तो वो आपको बता दिया ये क्या है, ये बिजनेस इनकम है, कैपिटल गेन हो ही नहीं सकता, और डेरिवेटिव में हमेशा बिजनेस इनकम होती है। और एक होता है इंट्राडे ट्रांजैक्शन शेयर्स की, वो स्पेकुलेशन इनकम है या स्पेकुलेशन लॉस है। दैट इज लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस और इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन। कैपिटल गेन तो तभी होता है जब डिलीवरी ली जाए, डिलीवरी लेने के बाद बेचे तो कैपिटल गेन हो सकता है। इंट्राडे में तो डिलीवरी होती ही नहीं, और जब डिलीवरी नहीं है तो ये स्पेकुलेशन लॉस या स्पेकुलेशन इनकम है। और डेरिवेटिव तो हमेशा बिजनेस लॉस या बिजनेस इनकम है। इसमें तो लॉसेस की भी प्रॉब्लम पड़ेगी। स्पेकुलेशन लॉस कैन ओनली बी सेट अप फ्रॉम इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस, इट कैन नॉट बी सेट अप फ्रॉम एनी अदर बिजनेस, बट ए बिजनेस लॉस कैन बी सेट अप बोथ फ्रॉम बिजनेस इनकम एज वेल एज स्पेकुलेशन इनकम। फिर डेरिवेटिव की बिजनेस है, हम तो कर ही नहीं सकते, ना मैं ना आप, ना इंट्राडे कर सकते हैं, ना डेरिवेटिव का बिजनेस कर सकते,
क्योंकि वो तो बिजनेस ही माना जाएगा। हम तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट इनटू शेयर कर सकते हैं, हम ओनली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं नहीं। इवन आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में हैं तो कर्ता अगर आप हैं तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी कोई बिजनेस नहीं कर सकती। आप करता है तो आप नहीं कर सकते बिजनेस। ये तो इंस्टीट्यूट का प्रोग्राम है, मेरा नहीं है। ये तो डिसिप्लिनरी एक्शन हो जाएगा जो गलत काम करेगा। अब अगर आपने किया हुआ है पास्ट में तो बंद कर दो, नहीं तो कोई शिकायत हो गई तो मुश्किल पड़ जाएगी। बंद कर दो। बहुत करते हैं, बताते नहीं है, लेकिन ना करना रिस्क हो जाएगा, क्योंकि यू आर नॉट अलाउड टू कैरी ऑन एनी बिजनेस इफ यू आर होल्डिंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। ये भी आपको बता दो। कई सोचते हैं यार हम तो करते रहे, मैं भी मानता हूं करते रहे होगे, लेकिन अब तो बंद कर दो यार। जब पता लग गया, जब भूला हुआ जब भी ठीक टाइम पे आ गया तो उसको पता लग गया तो भूला हुआ नहीं माना जाता। छोड़ दो ना, आगे तो ठीक कर लो अपने आप। यू कैन नॉट डू डेरिवेटिव इज ऑलवेज बिजनेस इनकम। डेरिवेटिव का वेदर कमोडिटी और शेयर इज ऑलवेज बिजनेस इनकम। एंड इवन मैंने आपको बताऊं सर, मैंने गवर्नमेंट एम्प्लॉय को डेरिवेटिव करते हुए देखा है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय बिजनेस कर ही नहीं सकता। वो कैसे कर रहे हैं उनको भी नहीं पता, कर देते हैं, डेरिवेटिव में करवा रहे। वो उसका शेयर, उसको ब्रोकर को बोल रखा है, वो डेरिवेटिव खरीद देता है और उसको पता नहीं होता बिजनेस इनकम। कहते हैं हम तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स दिखाते हैं, हो ही नहीं सकता। वो तो है ही बिजनेस इनकम। मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन लोग करे जा रहे हैं। अब जो करे जा रहे हैं करे जाओ, लेकिन अपने आप को सुधार लो सर। ये इंफॉर्मेशन, क्योंकि अब थोड़े दिनों में सारी इंफॉर्मेशन डिपॉजिटरी की आ जाएगी रिकॉर्ड में, तो वहां डेरिवेटिव की भी आ जाएगी, नॉन डेरिवेटिव की आ जाएगी, शेयर्स की भी आ जाएगी। और जब वो इंफॉर्मेशन आ गई तो आप खुद फंस जाओगे। 26 एस में पूरी इंफॉर्मेशन होगी आपकी, जो भी आगे आएगी इंफॉर्मेशन। क्लियर है सर? क्लियर है? ये डेरिवेटिव समझ में आ गया? कोई क्वेश्चन है डेरिवेटिव पे तो पूछ लीजिए। अभी तो मैंने बहुत कुछ करना है, लेकिन मैं डेरिवेटिव की बात कर रहा हूं। कोई क्वेश्चन तो पूछ लीजिए। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास प्रोवाइजोज हैं सेक्शन 48 में। अब मैं वहां जा रहा हूं प्रोवाइजो में। फर्स्ट प्रोवाइजो क्या कहता है? कहता है इन केस ऑफ ए नॉन रेजिडेंट who has bought any shares or debentures of Indian company. Shares मैंने बोला, listed share नहीं कहा है, shares of an Indian company or debentures of Indian company bought in foreign currency. मैंने convertible foreign exchange नहीं बोला, bought in foreign currency. Then for the purpose of computing capital gain, its cost of acquisition shall be converted into the same currency in which it was bought, and sale price will also be converted in the same currency in which it was bought. So आपको सेल प्राइस को भी कन्वर्ट करना है, परचेज प्राइस को भी करना है, क्योंकि आपने तो परचेज पर हमने रुपीस में लिए, लेकिन आपने तो करेंसी भेजी थी, फॉरेन करेंसी। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, रिकन्वर्ट कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को भी और कंसीडरेशन प्राइस को भी। व्हाट रेट? एट द एवरेज ऑफ टीटी बाइंग रेट एंड टीटी सेलिंग रेट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन एज वेल एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। फिर हम उसका कैपिटल गेन निकालते हैं, हो सकता है शॉर्ट और लॉन्ग टर्म हो, और फिर उसको रिकन्वर्ट करते हैं एट टीटी बाइंग रेट। ये सिस्टम है। जो फ्लक्चुएशन ऑफ द करेंसी वो हमें बेनिफिट मिल जाता है। हमें बेनिफिट मिल गया, क्योंकि हो सकता है जब आपने शेयर खरीदा तो 30 रुपए की फॉरेन रेट था, डॉलर था। आज आप शेयर बेचने जा रहे हैं 74 रुपए का शेयर, तो आपको 74 रुपए को बेच के जब अपने घर वापस लेके जाना है तो वो तो फॉरेन करेंसी में ही मर जाएंगे। आपको तो नुकसान हो गया। लेकिन टीटी बाइंग रेट में कोई दिक्कत नहीं होगी ना, क्योंकि आप कन्वर्ट कर लोगे फॉरेन करेंसी में, और जब फॉरेन करेंसी में करोगे तो डॉलर के अंदर ही कैपिटल गेन निकालना, तो डॉलर में निकलेगा तो कैपिटल गेन देना, नहीं तो देना ही नहीं। क्लियर हो गया सर? तो आपको जितनी फ्लक्चुएशन का बेनिफिट मिल गया, इसलिए इसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है, इंडेक्सेशन नहीं मिलता है। तो जितने भी नॉन रेजिडेंट हैं जिन्होंने फॉरेन करेंसी से कोई शेयर्स और डिबेंचर्स इंडियन कंपनी के लिए ले रखे हैं, उनके लिए स्पेशल मेथड ऑफ कंप्यूटिंग कैपिटल गेन है। यू हैव टू कैलकुलेट द कैपिटल गेन इन द सेम करेंसी इन विच दोज शेयर्स वर बॉट और
sold also will be converted in the same currency. You will calculate capital gain and then reconvert into capital Indian currency. ये क्लियर हो गया सर? प्रोवाइजो 2 कहता है कि आप बाकी एसेट को इंडेक्स कर सकते हो इफ इट इज ए लॉन्ग टर्म कैपिटल की, लॉन्ग टर्म। बट रुकिए, प्रोवाइजो 3 कहता है जी नहीं, आप बॉन्ड और डिबेंचर्स को इंडेक्स नहीं कर सकते। बॉन्ड और डिबेंचर कैन नॉट बी इंडेक्स। वो तो इंडेक्स करके तो मर जाएगा, सरकार ही मर जाएगी, क्योंकि बॉन्ड की कीमत 100 रुपया और वो इंडेक्स हो जाएगा। अगर 5 साल बाद रिडीम होगा तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट देते तो हमेशा लॉस ही आएगा। तो बॉन्ड को तो रिडीम करते हुए 100 ही मिलता है या थोड़ा बहुत प्रीमियम दे देंगे। तो इंडेक्सेशन ऑफ बॉन्ड और डिबेंचर नॉट अलाउ। सिर्फ 2 तरह की चीजें इंडेक्सेशन अलाउ होती है, कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड, अगर कोई इंडेक्स किए हुए, वो तो स्पेशल है, उसका नाम ही कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड, या वो जो गोल्ड सर्टिफिकेट, गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम के सर्टिफिकेट है, उसको इंडेक्सेशन अलाउड है। बाकी किसी की इंडेक्सेशन अलाउड ही नहीं है। बॉन्ड एंड अलाउड ही नहीं है, नॉट अलाउड इंडेक्सेशन। जीरो कूपन बॉन्ड की भी इंडेक्सेशन अलाउड नहीं है, अलाउड ही नहीं। क्लियर हो गया? अगला क्या कहता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो आप पे करते हैं वो आपका एक्सपेंस नहीं है। इट इज नॉट योर एक्सपेंस, नाइदर इट गोज टू कॉस्ट नॉट इट इज अलाउड एज एक्सपेंसेस ऑफ ट्रांसफर। एसटीटी कोई एक्सपेंस नहीं। एक और बात है, 112A में अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, 112A में शेयर्स का या यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, उस केस में भी इंडेक्सेशन अलाउड है ही नहीं। वो भी आपका मामला गड़बड़, उसमें इंडेक्सेशन बैंड कर दी, वो भी इंडेक्सेशन अलाउड नहीं होगी। ये बातें समझ में आ रही? 112A में नो इंडेक्सेशन अलाउड। इफ यू आर सेलिंग द शेयर थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, यू आर नॉट अलाउड इंडेक्सेशन ऑफ कॉस्ट, नॉट अलाउड। हाँ, अगर ऑफ मार्केट बेचते हैं तो इंडेक्सेशन अलाउड है, मैं थोड़ी देर में बताऊंगा क्या हो। लेकिन ऑन मार्केट बेचते हैं तो शेयर्स की इंडेक्सेशन नॉट अलाउड है, क्योंकि वहां पर आपको कैपिटल गेन 10% देना है। अभी बताऊं। क्लियर हो गया ये भी पॉइंट? कोई क्वेरी? नहीं तो मैं आगे जा रहा हूं। मैं पहले सेक्शन ले रहा हूं 112A, फिर लूंगा 112, क्योंकि मैं 111A तो ले चुका हूं। 112A क्या कहता है? नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड under any other provisions of the income tax act, notwithstanding, if there is a transfer of share listed on a recognized stock exchange and certain condition mentioned under section 112A subsection 2 are satisfied, then such capital gain shall be taxable at a special rate of 10% of an amount एक्सीडिंग ₹1 लाख। 1 लाख रुपए पर तो कैपिटल गेन वैसे ही माफ है। 1 लाख तक कोई कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म नहीं लगेगा इफ यू सोल्ड इट थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। जितना भी 1 लाख से ऊपर है उस पे कैपिटल गेन का क्या रेट है? 10%। कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन दैट देयर मस्ट योर टोटल इनकम शुड इंक्लूड कैपिटल गेन, एंड सच कैपिटल गेन शुड बी through the sale of equity shares or unit of equity oriented fund which you have sold through recognized stock exchange. Rather sold nahi hai, where at the time of purchase as well as at the time of sale the security transaction must have been paid at the time of acquisition and the time of sale. But wait, एक notification 60/2018 में लिख दिया कि there are certain cases where at the time of purchase there is no need to, you might not have paid security transaction tax. उनको छोड़कर बाकी at the time of acquisition, at the time आपको security transaction tax दिया होना चाहिए। अगर यूनिट है इक्विटी ओरिएंटेड फंड के तो only at the time of transfer, not at the time of purchase. Only at the time of transfer, not at the time of purchase. ठीक है सर? इसके ऊपर कैपिटल गेन जो लगेगा, हमने आपको कहा उस पे स्पेशल रेट है 10% का of an amount exceeding 1 lakh if certain conditions are satisfied. Condition कहता है no indexation shall be allowed. The proviso, first proviso and second proviso both are not applicable.
फर्स्ट प्रोवाइजो कौन सा? इफ यू हैव बॉट, नॉन रेजिडेंट हैज बॉट शेयर ऑफ इंडियन कंपनी, यहां इसको लिस्टेड पढ़ लो, इंडियन कंपनी, तो फर्स्ट प्रोवाइजो नॉट एप्लीकेबल, 112A में आएंगे। सेकंड प्रोवाइजो इंडेक्सेशन नॉट अलाउड। सो दोनों प्रोवाइजो नहीं लगते अगर 112A में है। 112 में क्या आता है? लिस्टेड शेयर सोल्ड थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। तो प्रोवाइजो फर्स्ट भी नहीं लगेगा, चाहे नॉन रेजिडेंट हो चाहे रेजिडेंट हो। ना तो इंडेक्सेशन होना है, ना ही वो टीटी बाइंग रेट, वो फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट नहीं होना है। वो फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट नहीं होना अगर वो लिस्टेड शेयर है। अब कैपिटल गेन निकालेंगे, वो अलग बात है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर के लिए है तो वहां पर उन्होंने कर दिया। और एक और बात कह दी, 87A का रिलीफ भी नहीं मिलेगा इस कैपिटल गेन से। 87A वो है ना 5 लाख तक आपकी अगर टोटल इनकम इंडिविजुअल की ज्यादा नहीं है तो उसको आपको कहते हैं फुल इनकम एग्जेम्प्ट होती है। तो वहां 87 क्यों? एक्चुअल और 12,500 रुपीज विच एवर इज लेस, तो वो भी रिलीफ आपको नहीं मिलेगा 87A का इस कैपिटल गेन से। बाकी से मिलेगा, इस कैपिटल गेन से नहीं मिलेगा। तो आपको कैसे कैपिटल गेन निकालना है? वो कहता है जी कंसीडरेशन प्राइस माइनस फेयर मार्केट वैल्यू। अब फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकालनी है? उसके लिए 55 सेक्शन में फेयर मार्केट वैल्यू लिखी हुई है, कैसे निकालनी? सुनेंगे फेयर मार्केट वैल्यू क्या है? जरा ध्यान से सुनना, प्लीज ध्यान से सुनना, मैं आपको बोल रहा हूं। हायर ऑफ नंबर 1 कॉस्ट ऑफ दिस शेयर। तो कॉस्ट क्या लेंगे? व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट? प्लीज, अगर 1/4/2001 से पहले है तो आप फेयर मार्केट वैल्यू ले लेना कॉस्ट को, और 1/4/2001 के बाद है तो कॉस्ट आपको मालूम है। मेरी बात को समझ रहे हैं? हायर ऑफ द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ दोस शेयर। सो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ दोस शेयर? इफ बॉट बिफोर 1 April 2001, मार्केट वैल्यू। इफ बॉट आफ्टर 1 April 2001, परचेज प्राइस। ये पहली क्लियर हो गई? क्लियर हो गई? हायर ऑफ द कॉस्ट। एंड आगे क्या लिखा है बी में? एंड लोअर ऑफ द फॉलोइंग 2 आइटम्स। लोअर ऑफ द फॉलोइंग 2, व्हाट इज लोअर ऑफ द फॉलोइंग 2? नंबर 1 फेयर मार्केट वैल्यू as on 31st January 2018, and second is its sale price. Lower of that, its sale price. मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, जरा उससे ध्यान से सुनना। मैंने रिलायंस के शेयर खरीदे थे 25 साल पहले, 200 रुपए पर शेयर। फेयर मार्केट वैल्यू मुझे नहीं पता 1 अप्रैल 2001 में क्या थी, लेट्स से 300 रुपए, 400 रुपए पर शेयर थी, लेट अस से 400। तो मेरी कॉस्ट क्या होगी? 400। लेकिन अगर मैंने खरीदे थे 2015 में तो जितने के खरीदे वो मेरी कॉस्ट है। ठीक है सर, मैंने 400 कॉस्ट ली। अब इसको कंपेयर कीजिए, लोअर ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 31st जनवरी। सपोज फेयर मार्केट वैल्यू 31st जनवरी की 1600 रुपया है, तो 1600 रुपया, और आज बेचना चाहता हूं तो आज 2200-2300 रुपया हो गई, तो लोअर ऑफ की कौन सी होगी? 1600 होगी। तो 1600 या कॉस्ट 400, विच एवर इज हायर, तो 1600 होगा। सपोज भगवान ना करे, वैसे तो 2300 है, सपोज कल रिलायंस की कीमत 1400 रुपए हो जाएगी, तो मैंने कितने का बेचा होगा? 1400 का। अगर 1400 की है तो मेरी कॉस्ट क्या होगी? कॉस्ट और लोअर ऑफ द 2, लोअर क्या है? जनवरी की और बेचने की 1400 है, तो 1400 माइनस 1400 0, लॉस अलाउड ही नहीं होगा। लॉस अलाउड नहीं होगा। आप समझ रहे मेरी बात? ये मैं क्या कह रहा हूं? लोअर ऑफ द 2 आपकी जो, अगर आपने 31 जनवरी 2018 के बाद बेचे हैं और आपके पास 31 जनवरी 2018 से पहले के हैं, तो आपको लॉस नहीं अलाउड होगा। लेकिन 31 जनवरी 2018 तक ग्रैंड फादरिंग कर दी। ग्रैंड फादरिंग मीन्स आपको हमने फेयर मार्केट वैल्यू 31 जनवरी 2018 की देकर आपका कैपिटल गेन उतना माफ कर दिया, क्योंकि अब आपका कैपिटल गेन टैक्स होने लग गया है। ये क्लियर है सर? ये क्लियर है? कोई एग्जांपल और चाहिए? कोई समझने की दिक्कत है तो मैं बता देता हूं। लेकिन ये वो वाले शेयर की है फेयर मार्केट वैल्यू जो 31 जनवरी 2018 से पहले वाले आपके पास। जो 31 जनवरी 2018 के बाद नहीं है वो तो नॉर्मल है, उसके बारे में हमें क्या करना है। और मैंने बोला 31 जनवरी 2018 से पहले अगर बोनस शेयर भी हैं तो भी आप फेयर मार्केट वैल्यू ले सकते हो, 31 जनवरी 2018 की फेयर मार्केट वैल्यू। क्लियर हो गया?
112A हो गया सर, और 112A है किसके लिए? Only share listed on a recognized stock exchange, sold through recognized stock exchange, on which two conditions satisfied: at the time of purchase as well as the time of sale, STT has been paid. STT has been paid. If it is equity oriented fund, STT paid only at the time of sale. You are allowed capital gain to be taxed at 10% without indexation, but you are allowed to assume fair market value of shares. यूनिट के लिए फेयर मार्केट वैल्यू नहीं है, यूनिट के लिए नेट एसेट वैल्यू NAV ऑन 31 जनवरी. यूनिट के लिए NAV है और शेयर्स के लिए फेयर मार्केट वैल्यू. कौन सी फेयर मार्केट वैल्यू है? उस स्टॉक एक्सचेंज की जो हाईएस्ट प्राइस है ऑन दैट डे ऑन 31 जनवरी, वो हाईएस्ट प्राइस आपकी फेयर मार्केट वैल्यू मानी जाएगी उस शेयर की, हाईएस्ट. आप कहेंगे उस दिन ट्रेड नहीं हुए, कहते कोई बात नहीं, जब भी ट्रेड उससे पहले हुए हैं उसकी हाईएस्ट वैल्यू ले लो, वो आपकी फेयर मार्केट. क्लियर हो गया सर? क्लियर हो गया 112A? कोई डाउट, कोई शक, कोई शुबा कोई हो तो बता दीजिए. लेकिन मैं बता रहा हूं, अब जरा ध्यान से सुनिए. मैंने ये शेयर बेचे और मैं 54EC लेना चाहता हूं या मैं 54F लेना चाहता हूं, तो पहले आपने कैपिटल गेन निकालना है, उसके बाद वो 1 लाख माफ होता है. 1 लाख तो फाइनल कैपिटल गेन माफ होता है. तो पहले आप 54 का F का बेनिफिट लो, उसके बाद अगर कोई कैपिटल गेन मिलेगा तो 1 लाख रुपए का बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा. आपको बात समझ में आ गई मैंने क्या कहा? क्योंकि कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट तो 54, 54B, 54EC, 54F तो बिफोर कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल टोटल इनकम है, और जब टैक्स निकालना है वो तो आफ्टर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम होता है कि जितने टोटल इनकम में ये शेयर की वैल्यू है उसमें 10%. तो प्लीज अगर आपने ये शेयर थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज बेचे हैं और आप 54EC लेना चाहते हो, अलाउड ही नहीं है 54EC, अब वो बंद हो गया, सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए अलाउड. वो सॉरी, लैंड एंड बिल्डिंग के लिए 54EC है. 54EC मिलेगा ही नहीं तो क्या मिलेगा? 54F मिल सकता है. क्या मिल सकता है? 54F, अगर आप कंडीशन सेटिस्फाई करें. EC तो मिलना ही बंद हो गया ना, वो तो लैंड एंड बिल्डिंग के लिए रह गया. अब 54F मिल सकता है. तो पहले 54F लीजिए और 54L में एंटायर नेट कंसीडरेशन प्राइस इन्वेस्ट करनी पड़ती है अगर कैपिटल गेन माफ कराना है. एंटायर नेट कंसीडरेशन प्राइस पूरा कराना है, नहीं तो प्रोपोर्शनेट करना पड़ता है. प्रोपोर्शनेट करके कर लीजिए. तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि आपको 112A कैसे करना है. आइए अब 112 पे आ जाते हैं. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, लेकिन यही शेयर्स का है, लिस्टेड शेयर्स का, लेकिन आप रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू नहीं बेच रहे. आपके सिक्योरिटीज हैं, लिस्टेड हैं, लेकिन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेचे या बेचे. पता क्या कहते हैं? आपके पास 2 ऑल्टरनेटिव हैं. 20% आफ्टर इंडेक्सेशन, 10% विदाउट इंडेक्सेशन. अगर ये मेरे पास जो लिस्टेड शेयर हैं, अगर मैं ऑफ मार्केट बेचना चाहता हूं तो मेरे पास 2 तरीके हैं. 20% आफ्टर इंडेक्सेशन, 10% विदाउट इंडेक्सेशन, whichever suitable to me, whichever suitable to me. लेकिन फिर यहाँ फेयर मार्केट वैल्यू मत लेना, वो तो 112A के लिए है. 112 में तो वही लेंगे जो आपकी कॉस्ट है. सिर्फ आपको एक एडवांटेज दे रहे हैं, 1 अप्रैल 2001 का एडवांटेज देंगे. वो तो अनलिस्ट, वो चाहे इंडेक्स करो ना करो, 1 अप्रैल 2001 तो सबको मिलेगा. अब इंडेक्सेशन करोगे तो 20% दो, विदाउट इंडेक्सेशन है तो 10%. क्लियर हो गया सर? क्लियर हो गया? 112 का लिस्टेड का. अनलिस्टेड शेयर है तो आपको इंडेक्सेशन के बाद 20% लगना है, आफ्टर इंडेक्सेशन 20%. अनलिस्टेड शेयर, लेकिन यू कैनॉट सेल इट फॉर लेस देन फेयर मार्केट वैल्यू. वो तो आपको नहीं, अगर केल करोगे लेस तो 50CA आ जाता है. सेक्शन 50CA क्या कहता है? Where there is a transfer of share of a company in which public are not interested, substantially interested, मतलब unlisted share transfer करें, then the consideration price shall be deemed to be fair market value as on the date of transfer. तो 50CA लग चुका है शेयर्स में भी, अनलिस्टेड शेयर का, तो आपको फेयर मार्केट वैल्यू निकालनी पड़ेगी एज पर 11UA.
रूल 11 यूए से फेयर मार्केट वैल्यू निकालिए, नहीं तो वो डीम्ड कंसीडरेशन फेयर मार्केट वैल्यू होगी। आप फेयर मार्केट वैल्यू निकालकर आप इंडेक्स करना है तो कर लीजिए और आपको। लेकिन अगर वो नॉन रेजिडेंट है तो सुनिए, नॉन रेजिडेंट के केस में दो ऑल्टरनेटिव हैं। अगर अनलिस्टेड शेयर है, वन ऑल्टरनेटिव 10% विदाउट इंडेक्सेशन, अनदर ऑल्टरनेटिव 20% विद इंडेक्सेशन। ये नॉन रेजिडेंट के लिए अनलिस्टेड शेयर का, नॉन रेजिडेंट के लिए अनलिस्टेड शेयर का। क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? जीरो कूपन बॉन्ड पे वो कहते हैं आफ्टर इंडेक्सेशन 20, विदाउट इंडेक्सेशन 10। लेकिन इंडेक्सेशन तो होता ही नहीं है जी, बॉन्ड तो इंडेक्सेशन होते ही नहीं, तो हमेशा ही 10% लगेगा। आप किस बात को इंडेक्स करोगे सर? इंडेक्सेशन अलाउड ही नहीं है बॉन्ड, तो आप 10% दोगे विदाउट इंडेक्सेशन। क्लियर हो गया? जीरो कूपन बॉन्ड विदाउट इंडेक्सेशन 10%। क्लियर हो गया सर? मैंने 112 सेक्शन भी कर दिया शेयर्स के लिए, बाकी के लिए तो अलग है, शेयर्स के लिए। कोई डिफिकल्टी, कोई प्रॉब्लम, कोई और चीज है तो पूछ लीजिए। मैं आपको पूरी चीजें बता रहा हूं। अभी तो और भी कई पॉइंट होंगे, अगर कोई पॉइंट अगर बताना है तो मेरे से पूछ लीजिए, मैं आपको जवाब दे दूंगा, नहीं तो फिर क्वेरीज लूंगा मैं। अभी कोई और पॉइंट है, अभी कैपिटल गेन में कोई मैंने छोड़ दिया हो, आप जरूर पूछिए कि जी ये वाला कवर कर दो या ये वाला कवर कर दो। कई बार रह जाता है ऑफलाइन, मेरे को कोई सामने कागज तो रखे नहीं होते, तो कई बार रह जाता है, तो पूछिए। कोई मैंने छोड़ दिया हो तो मैं बता दूंगा आपको, पूछिए कोई है तो। नहीं तो फिर लेट अस टेक द क्वेश्चंस नाउ। और बनाते मतलब बड़ा लगेगा है ना, और सेट देने के टाइम इससे नहीं देने का, अगर किसी को चाहिए हो। हाँ जी बोलिए, एनीबडी हैज एनी प्रॉब्लम? Sir, Daga sir has some problem. I request Daga sir to unmute his mic. आप जितने सवाल पूछने पूछ लीजिए, पहले सिर्फ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज के पूछना, उसके बाद कोई और भी टाइम होगा तो कुछ भी पूछ लेना इनकम टैक्स का, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पहले शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। आइए बताइए, बोलिए दागा साहब क्या है? Sir, I think you have addressed the answer. His question was if resident assessee buys foreign asset in the nature of securities in foreign currency, whether exchange different on sale is taxable as capital gain loss. और वहां का लॉ मुझे नहीं लेना देना। यहाँ पे तो आपने फॉरेन करेंसी में भेजा है, शेयर खरीदे हैं, वहां पे जो कैपिटल गेन कंप्यूट होगा पहले वहां टैक्सेबल होगा, फिर इंडिया में टैक्सेबल होगा, बात खत्म। करेंसी उसी करेंसी में तो हो रहा है, उस करेंसी में वहां कैपिटल गेन होगा, जो कैपिटल गेन हुआ पहले वहां टैक्सेबल होता है, फिर इंडिया में भी टैक्सेबल हो जाता है। तो वो रूल है, उसमें क्या फर्क पड़ेगा? इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर लेंगे, जो फॉरेन करेंसी का कैपिटल गेन है ऑन दैट डेट, रूल वो निकाल लीजिए 115, वो रूल है। चलिए आगे बोलिए। सर आई हैव अ क्वेरी, कैन आई आस्क? मैंने पूछा जो मर्जी पूछे सर, मैं तो नाम भी नहीं पूछ रहा। बोलिए सर, बोलिए। एक लिस्टेड कंपनी के शेयर्स थे डीमैट अकाउंट में, पर वो डीलिस्ट हो गए। डीलिस्ट होने से पहले उसकी फेस वैल्यू बहुत नॉमिनल 1-1.5 रुपया था, पर 2013 तक का उसका सिर्फ रेगुलेबल यूए अप्लाई हो जाएगा, पर उसके फाइनेंशियल कंपनी से पूछना पड़ेगा, कंपनी ट्रांसफर कर रही है उनसे पूछे क्या वैल्यू है। कंपनी ट्रांसफर कर रही है ना, तो 100 आपको लगेगा 50 सीए। सर बट वो कंपनी का कुछ अवेलेबल है नहीं सर। वो देखिए इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो। वैसे तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में तो सब कुछ अवेलेबल होता है, या कोई बड़ी होगी, जो बड़ी कंपनी थी जो डीलिस्टेड हुई है, तो उनकी ट्रांजेक्शन जो हुई होंगी वो बताएंगे कंपनी वाले, नहीं तो फिर आपको तो वो अपने आप ये कैलकुलेट करेगा 115 यूएन निकाल सके तो आप फिर वो देखेगा। और क्या कर सकते हैं, हमारे पास तो कोई तरीका नहीं है। आप अपने उसको वैल्यूअर्स को कहिए करके दिखा दे, कहीं और ढूंढ देगा कहीं पता करके। उसके लिए कोई डेटा अवेलेबल है? डेटा तो अवेलेबल होता है, कैसे नहीं होता डेटा? आप उससे ले लेते हो, एमसीए से डेटा अवेलेबल है। ओके सर हेलो। हाँ जी। that particular unlisted company is under the courts winding up and all the records are with the official liquidator and official किसने कह दिया? not in position एमसीए के रिकॉर्ड एमसीए के पास है, एमसीए के रिकॉर्ड एमसीए के पास है। एमसीए को लास्ट बैलेंस शीट एमसीए के पास अवेलेबल मार्च 2013 की है।
सर और 13 से अभी तक वो चल रहा है आईबीसी। अरे तब तो आईबीसी लॉ ही नहीं था यार। 2014 में कोर्ट वाइंडिंग अप हुआ है। कोर्ट का वाइंडिंग अप हुआ तो वाइंडिंग अप की वैल्यू क्या रह जाती है यार? लिक्विडेटर को पता है क्या वैल्यू है उसकी? अरे यार लिक्विडेटर को मालूम है कि क्या वैल्यू है? लिक्विडेटर है ना उसका। लिक्विडेटर को पूछा है लेकिन अभी हाँ लिक्विडेटर है। हाँ तो लिक्विडेटर बता देगा, आपको क्या दिक्कत है? हेलो। हाँ जी। हाँ बायबैक शेयर्स 115 QA। अच्छा। अब बाईबैक में क्या हो गया, चाहे वो लिस्टेड हो या अनलिस्टेड कंपनी हो, difference between the price which is given to you and the price at which it was issued, on that company will pay 20% plus 12% plus 4% education cess। और आपके हाथ में सेक्शन 1034A में फुल्ली एग्जेम्प्ट, 1034A फुल्ली एग्जेम्प्ट, और कंपनी को 115 QA में टैक्स देना पड़ेगा बाईबैक ऑफ शेयर। ठीक है जी? अरे बोल तो दीजिए। हाँ जी ठीक है। हाँ जी बोलिए, आगे बोलिए और पूछिए जो सवाल पूछने हैं, पूछते जाइए जो पूछना है। हेलो सर। हाँ जी। एम आई ऑडिबल? ऑडिबल ऑडिबल सर ऑडिबल। हाँ सर, मैंने चैट बॉक्स में भी पूछा था कि सीए है, दो डीमैट अकाउंट रखता है, एक लॉन्ग टर्म में एक शॉर्ट टर्म में, इंट्राडे नहीं करता है, नो इंट्राडे, तो वो बिजनेस नहीं होगा ना? नहीं, मेरे भी 3 डीमैट अकाउंट है, मेरे अपने 3 है, मेरे अपने 3 डीमैट अकाउंट है। और चिंता क्यों करते हो? नहीं सर, पूछ रहा हूँ। आई हैव केप्ट इट एज इन्वेस्टमेंट एंड आई एम शोइंग इट एज इन्वेस्टमेंट। मगर कभी कभार एक दिन में सेल हो जाता है तो डिलीवरी के बाद हुआ तो चल जाता है। हाँ, डिलीवरी के बाद ही होता है। डिलीवरी पूरा डिलीवरी लेके काम करते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। आपको हमेशा वही दिखाना है। आपको नहीं, मैं तो कर ही नहीं सकता बिजनेस, तू मरवाएगा मुझे। आई कांट डू बिजनेस, वी कांट डू बिजनेस। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू। मेरा सीक्रेट बता नहीं देना, मेरे 3 डीमैट अकाउंट है। चलिए ये रिकॉर्ड हो जाता है। प्रॉब्लम ये है, अभी आप तो बोल रहे हैं ना सभी का सब कुछ रिकॉर्ड है, तो अभी जाने ये तो रिकॉर्ड हो जाता है, यही तो बीमारी है मुझे। चलिए आई एम नॉट वरीड सर, आई एम नॉट। यस सर, आई एम आल्सो नॉट वरीड। हाँ चलिए आगे और सवाल पूछिए सर। और चैट में तो चैट बॉक्स में पूछ लीजिए, मैं नहीं पढ़ता चैट अपने आप। उसका कारण है, मैं कारण बता दूं क्यों है। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, चैट बॉक्स में जो सवाल उनको नहीं आता उसका जवाब नहीं देते, पढ़ते ही नहीं और दूसरा सवाल पढ़ लेते हैं। मैं वो नहीं देता, मैं कहता हूं जो पूछना पूछ लो, आप पूछ लो। कभी मुझे बाद में कंप्लेंट मत करना कि जी मेरा सवाल नहीं बताया आपने। मैं कहूंगा आपके होस्ट ने पूछा ही नहीं तो मैं कैसे बता, मैंने नहीं पढ़ा है चैट में। हाँ जी बोलिए सर। The technical point, the CA Karta is a partner in a firm carrying on a business of shares. Actually, he has invested. He has the will. CA is a partner, a Karta in a business firm. Inform the institute, and you should not operate any account. Okay. क्योंकि मेरी वाइफ की डेथ हो गई, वो 6 कंपनियों में पार्टनर थी और वो बिजनेस कर रही थी, तो इंस्टीट्यूट अलाउ किया मुझे। मैंने अपने पुस्तक लिख के दिया कि मेरी वाइफ 6 में पार्टनर थी और मैं लीगल एयर हूं और मेरे को इसको पार्टनर बनना है, तो उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया पार्टनर बनना। लेकिन यही कंडीशन, आई विल नॉट ऑपरेट एनीथिंग, वर्किंग पार्टनर नहीं होऊंगा, स्लीपिंग पार्टनर अलाउड है और मैं प्रॉफिट ले सकता हूं, ना सैलरी ले सकता हूं, इंटरेस्ट ले सकता हूं। लेकिन अलाउ किया इंस्टीट्यूट ने। मैं 6 कंपनियों का पार्टनर हूं और वो सारों 6 कंपनियां बिजनेस कर रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। But I will have to inform the institute that this is the position. इंटरेस्ट ले सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाँ इंटरेस्ट ले सकते हैं, वो तो कैपिटल पे इंटरेस्ट है, क्यों नहीं ले, सैलरी नहीं ले सकते। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। जो फेवर में आ जाए ना वो थैंक यू बहुत होता है मेरा, और जो फेवर में ना बोलो तो बोलते ही नहीं है, चुप हो जाते हैं। जो आंसर उनके फेवर में मिलेगा बड़े खुश हो जाएंगे, थैंक यू सर, थैंक यू, बच गया। और जो उसके आगेंस्ट बोलो वो चुप होके बोल जाए। जो नेगेटिव आंसर होगा वो भी थैंक्स देना चाहिए, बिकॉज मेकिंग यू प्रॉपर वार्निंग बिफोर डूइंग इट। सर मैं हंस खेल रहा हूँ, आदमी ये हंस खेल लेना चाहिए, क्योंकि आदमी को इतना ज्यादा सीरियस नहीं होना चाहिए। ओके, बोलिए। थैंक यू सर।
सर ये जो सर आपने कहा इंटरेस्ट ले सकते हैं, लेकिन इंटरेस्ट अगर बिजनेस इनकम करके टैक्स हुआ इन द हैंड्स ऑफ द रिसिपिएंट सर तो वो परमिशन लेके लिया ना मैंने, ओके ओके कैपिटल के ऊपर परमिशन लिया, होता तो बिजनेस में ही है। आई यू फुल्ली एग्री विद यू, पर आपको तो मैंने कहा ना मैंने परमिशन लिया है, अदरवाइज तो शेयर ऑफ प्रॉफिट माफ है 10(2) में 10(2)(a) में, वो लिया परमिशन। ऐसे सर बगैर परमिशन के मैं काम ही नहीं करता। चलिए सर आगे बोलिए। Sir, chat box, we have one question from Sumit Barade, sir. Can we take advantage of bonus stripping? सर बोनस स्ट्रिपिंग किस में लोगे? अबे डिविडेंड स्ट्रिपिंग तो खत्म ही हो गया, क्योंकि डिविडेंड स्ट्रिपिंग में तब आपके हाथ में टैक्स लग गया। तो बोनस स्ट्रिपिंग किस चीज का लोगे? यू कैन ऑलवेज टेक द बेनिफिट, पर आपको पता है उसकी कॉस्ट मानी जाती है बोनस शेयर की, वो तो अलाउड है, वो तो ऑलरेडी 94(8) में लिखा है, सेक्शन 94(8) पढ़ लीजिए, बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए। Sir, next question is from Bhavana madam. Year-end open position of derivatives profit or loss, what is the tax treatment? बड़ा सिंपल है, डेरिवेटिव में all minuses, all incomes to be aggregated for the purpose of calculating turnover. For the purpose of calculating turnover for audit, all minus, all transaction minus all pluses, add them up. But the income is income positives minus negative, that is your income. All positive minus negative is income. But for the purpose of tax audit, इंस्टीट्यूट की गाइडेंस नोट में लिखा है all minuses, all positive should be added to calculate the turnover of that 1 crore, 2 crore or 5 crore, whatever you are thinking. Okay? चलिए. If a company having investment in subsidiary company which is unlisted, will it be investing capital gain or business income? सर देखिए, आप कंपनी का अगर सब्सिडियरी है तो जो सब्सिडियरी कंपनी होती है उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट है, यू आर डूइंग इन्वेस्टमेंट इन कंट्री, बोथ कंपनीज आर सेपरेट, वी डोंट हैव ए कॉन्सेप्ट ऑफ सब्सिडियरी और टैक्सिंग ऑफ सब्सिडियरी एंड होल्डिंग एज टुगेदर। अकाउंटेंसी कॉन्सेप्ट अलग है, इनकम टैक्स में अलग है। यू आर मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट देयर, इट व्हेन इन्वेस्टेड इज योर कैपिटल गेन, ये आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कंपनी लॉ देख लेना कि कंपनी लॉ में क्या अलाउड है, दैट इज डिफरेंट, इनकम टैक्स अलाउस। I can't hear you. I can't hear you. Somebody was talking something, but I can't hear you. Hello, sir. Can you hear me now? हाँ ना, louder, little louder. ये अपना माइक अपने पास ले लीजिए। Yes, sir. मैंने बोनस स्ट्रिपिंग के बारे में पूछा था, लेकिन मेरा इंटरनेट 94(8) पढ़ा, और वो जेंटलमैन दूसरे पढ़ रहे थे, उन्होंने अपनी किताब खोली, इमीडिएटली पढ़ा है, और आपने नहीं पढ़ा। I have seen the gentleman has opened the book, seen 94(8), satisfied, kept quiet. But you are not satisfied because you don't want to open your book. Open your book and then talk to me. No, sir. When you were talking, I lost my internet connection. आवाज नहीं आ रही आपकी प्रॉपर तरीके से, बहुत ही हल्की आवाज आ रही है। I can't hear you properly. कहीं प्रॉब्लम है आपके यहाँ? सर 94(8) बारी पढ़ता लेना यार, फिर बाद में बात कर लेना मेरे से। थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर रुको और 94(8) पढ़ के बात करो। आइए बाकी पूछे। सर, हाँ जी। हाँ, कोऑपरेटिव सोसाइटी परचेज वन लैंड, मार्केट वैल्यू अब अदर देन शेयर्स हो गए। चलिए बोलिए। हाँ, cooperative society purchase one land, market value of the government value of the same is 5 crores and actual consideration is 4.5 crores. So whether difference is taxable in the hands of cooperative society? दोबारा बोलिए। 4.5 करोड़ का आपने बेचा है और 4.5 करोड़ 4.5 करोड़ में एक्चुअली 5 करोड़ 4.5 करोड़ में परचेज किया है और 5 करोड़ की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है। हाँ, तो क्यों नहीं टैक्स लगेगा भैया? एनी पर्सन रिसीविंग फ्रॉम एनी अदर पर्सन। यस, सो न्यू एनी पर्सन रिसीविंग फ्रॉम एनी अदर पर्सन, वो तो लगेगा। यस,
वो चबाने चले गए, 56 to 10 में खत्म, किसी के बारे में पूछो नहीं, आंखें बंद करके को लगेगा। यस, ओके सर। और बोलिए, एनी अदर क्वेश्चन? मैंने आपको सफिशिएंट टाइम दिया है क्वेश्चन पूछने के लिए। नो अदर क्वेश्चन सर? If So let's wind up then. members want, सर चैट बॉक्स में भी क्वेश्चन नहीं है अभी, तो फिर लेट्स वाइंड अप। सब या तो कुछ समझ में नहीं आया या सब कुछ समझ में आ गया, दो ही अल्टरनेटिव है। नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता सर, आपने समझा। चलो 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 चलो, कोई सर, और मैंने तो पूछा, कोई और इनकम टैक्स का पूछना है वो भी पूछ लो क्वेश्चन, मुझे कोई दिक्कत नहीं। If members want to ask other than capital gain or any questions to sir, I request members to ask the questions by unmuting themselves. सर थक गए हैं, सुबह से पहले आपके एक और लेक्चर भी सुन चुके हैं ना, अब खाना खाने दीजिए उनको। सर नहीं थके नहीं है। सर पहला लेक्चर भी तो कराया आपने, अब मुझे नहीं पता किस टॉपिक पे था। सर एक बात पे थोड़ा इंफॉर्मेशन चाहिए, क्लैरिटी इन दिस फेसलेस असेसमेंट। हाँ, अगर रेक्टिफिकेशन का रिक्वेस्ट जो है वो ऑनलाइन जाएगा या जुरिडिक्शनल के पास करना है? अभी तो जुरिडिक्शनल पे जाना है, अभी तो जुरिडिक्शनल पे जाना है, लेकिन सेक्शन आ गया है 157B और वहां पर लिखा है आगे से वो आ जाएगा, अभी नोटिफाई होगा कि ये भी फेसलेस होगा। अरे हर चीज फेसलेस होने वाली है, मैंने बता दिया ना। इसको बजा, ये जो आया ना आपका बिल, ये जो अभी आया, जो बिल अभी पेश हुआ है, उसमें अपील तो आई गई, कल अपील का आ गया फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील कल नोटिफाई हो गई। रेक्टिफिकेशन फेसलेस, 263 फेसलेस, 264 फेसलेस, आपका रिफंड फेसलेस, आपकी डिमांड फेसलेस, मतलब फेस तो दिखाना ही नहीं, उनको फेस अच्छा ही नहीं लगता आपका। एवरीथिंग फेसलेस, आने दीजिए क्या क्या आने जा रहा है, सब कुछ फेसलेस होगा, एवरीथिंग फेसलेस, सब जगह उन्होंने डाल दिया, एवरी प्लेस दे हैव पुट इट। चलिए आगे बोलिए। I request members to make it fast, please. Sir is waiting for you all. सर क्या बोरोइंग कॉस्ट के बारे में बात कर सकता हूं मैं? ICDS? मुझे ICDS के बारे में बात ना करना। मैं जब पैदा हुआ था और जब सीए करी थी, मुझे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं पढ़े थे वहां पर, और अभी आपको भी कौन से आते हैं, आप लोग भी ऐसे ही बना देते हो। मेरे से बातें मत करना, मुझे ज्यादा नहीं पता। अरे मैं तो अपने स्टाफ वाले को बोल देता हूँ, उसको पता कि मेरे नहीं आते, वही देखता है, मैं नहीं बोलूंगा। मैं बहुत क्लियर हूं, जो चीज मुझे नहीं आती मेरे को नहीं आती, स्टाफ वाले करते हैं। और आपको भी अपने स्टाफ वाले को बोलो, ज्यादा जानता है हमसे, इसलिए कुछ नहीं मैं जानता। मैं गलत आंसर दे दूं, मैं तो ये काम करता ही नहीं, गलत आंसर देता नहीं। आई एडमिट आई डोंट नो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अरे कर रही क्या है, फॉर्म 3CD भरते हैं, नॉट एप्लीकेबल सारा ही हो जाता है मेरे ख्याल तो। और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखता ही कोई नहीं है, और सब बैलेंस शीटें साइन हो रही हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा कैसे हो रही हैं। मैं तो भगवान से मैं तो करता नहीं ना ऑडिट, आई हैव नेवर डन एनी ऑडिट। पिछले 40 साल से मैंने कोई बैलेंस शीट साइन नहीं करी, तो मुझे क्या पता क्या होता है ऑडिट, इसलिए तो बच गया हूं, नहीं तो अंदर ही होता। सेक्शन 36(1)(3) इंटरेस्ट कैपिटलाइजेशन का था सर क्वेश्चन। हाँ बोलिए 37(1)(BA) 36(1)(3) इंटरेस्ट कैपिटलाइजेशन और 36(1)(3) हाँ, और बोरोइंग कॉस्ट का जो ICDS है वो बोल रहा है कि इन्वेंट्री अगर आपकी 12 मंथ से ज्यादा होगी तो यू नीड टू कैपिटलाइज योर इंटरेस्ट। I know. In case of inventory, but 36(1)(3) does not speak anything about inventory. I just wanted to know your. It talks about 36(3)(1) talks about interest whether allowed as deduction or is part of the, it is to be capitalized. It is talks about the expense. So if it is expense, it can be of revenue expense also. It can be for inventory also. You must have borrowed the money. CC limit लेते हैं तो क्या होता है, तो CC limit का इंटरेस्ट अलाउड होता है कि नहीं होता, उससे आपने इन्वेंट्री तो खरीदी है, उसमें तो क्या ले, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मैं ये प्रॉब्लम बोल रहा हूँ, आप सिर्फ ICDS क्यों बातें करते हैं, अदर देन ICDS भी तो है।
आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इनकम कंप्यूटेशन, आप इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर सेंड करें, लेकिन एक वो इंड एस अलग चीज है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग है, वो ध्यान रखना। आप कई बार इंड एस के हिसाब से बना रहे हैं, आप अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना रहे हैं, उसका भी फर्क है, वो भी ध्यान रखना। चलिए, थोड़ा बहुत बता दिया, हालांकि मुझे आता नहीं था, थोड़ा बहुत फिर भी बता दिया आपको। चलिए। Sir, there is one question regarding section 1192B. Commissioner के पास से permission 1192B condonation of delay in filing of return. 192B condonation of delay, yes. Yes. Sir, अभी कमिश्नर सर से परमिशन ले ली है और रिटर्न फाइल कर दिया है, लेकिन ये रिटर्न प्रोसेस कहाँ पे होगा? प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर 50 लाख का है, 10 लाख कमिश्नर का है। कमिश्नर 10 लाख सर। हाँ जी, बोलो, फिर वो भर दो। तो वो कर दिया एप्लीकेशन और उसका नोटिस भी ये भी मिल गया है 1192B का, एंड रिटर्न इज बीन फाइल्ड अंडर सेक्शन 1192B, लेकिन वो प्रोसेस नहीं हो रहा है। तो अभी प्रोसेस इसलिए नहीं हो रहा कि आपको कमिश्नर को कहिए सिस्टम वाले को इन्फॉर्म करे। वो भी प्रोसेस हो चुका है सर एक्चुअली, और वो ट्रांसफर कर दिया है तो होगा सॉफ्टवेयर में तो नहीं जा रहे, सॉफ्टवेयर में नहीं होगा ये बातें। कई बार तो प्रॉब्लम आती है, सॉफ्टवेयर वाला अपने आप ही ब्लॉक कर देता है। सॉफ्टवेयर वाला सॉफ्ट बहुत है, आप अपने यूटिलिटी में जाओ, यूटिलिटी में रिटर्न फाइल हो चुका है सर, अभी फॉलो किसके पास से करें? यूटिलिटी में जाओ सर। ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। I think, sir, many questions are answered. चलिए फिर let us wind up. So I request you, sir, to offer formal vote of thanks to sir for giving such a knowledgeable session. Thank you, Rohan. Am I audible? Yes, you are audible. Rohan, am I audible? Yes, sir. Okay. सर, आहूजा सर के बारे में मैं बहुत छोटा हूँ बोलने के लिए, क्योंकि सर आपकी बुक लेके पढ़ा था तब मुझे इनकम टैक्स समझ आया था थोड़ा बहुत, और उसी वजह से पास हो पाया हूँ और आपके सामने हूँ। बट इट इज माय रिस्पांसिबिलिटी एज अ पास तो फिर भी हो जाते हैं इंस्टीट्यूट के, ऐसा कुछ नहीं है, वो आपने बड़प्पन है आप में, पास तो फिर भी हो जाते, मेहनत करो पास तो होते ही। थैंक्स अ लॉट। चलिए। हाँ। और बोलिए। It is my duty to propose a formal vote of thanks on behalf of Nashik branch. Sir, आप participants को बता दूं, this is the 162nd lecture Ahuja sir is taking after the lockdown on this new platform in this new normal. And ये energy at this age शायद ही किसी में हमको देखने को मिलेगी। From the bottom of my heart, मैं आपको बताऊं क्या है, ये भी सुन लेता हूं। आपको बताऊं क्या है, आप लोग इलेक्शन लड़ते हैं, आप ये आप मेंबर एग्जीक्यूटिव के, वो भी रोहन भी लड़ रहा है, आपको गालियां खाने का शौक है, हमें तालियां खाने का शौक है। हम तालियां खाते हैं, आप गालियां खाते हैं, पता नहीं, फिर भी आप इलेक्शन लड़ते हैं, मैं भी लड़ता हूँ। मैं इलेक्शन नहीं लड़ता, मैं लेक्चर देता हूँ, हालांकि इतना भी हो जाए, ये नशा है, इसे नशा कहते हैं। ये वो वाला नशा नहीं है, वो वाला नशा नहीं है कि हैश है कि गांजा है, ये भी हैश और गांजा से बड़ा नशा है। चाहे आप इलेक्शन लड़ रहे हो और चाहे आप लेक्चर दे रहे, ये नशा बदलता नहीं है सर, ये नशे की चीजों की वजह से लगे हुए हैं, और भगवान देता है सब कुछ उसके ऊपर वाले के, उसके ऊपर है। चलिए, थैंक यू। जितने भी पार्टिसिपेंट्स ऑनलाइन हैं और जिनका वीडियो ऑन है, मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि सर के लिए हम लोग ऑनलाइन तालियां बजाएं। वो आवाज नहीं आएगी ज्यादा। थैंक यू। सर, ये भी हसरत आपकी पूरी कर दी सर, हमने जब शुरुआत में। सर हसरत तो पूरी कर दी, लेकिन वो है ना, हमें क्या पता, निगाहें हमारी सिर्फ 6 आदमियों के पास है, बाकियों पे देखा नहीं, उनको समझ में आया कि नहीं आया, ये भी तो फर्क पड़ता है ना। और फिर वहां आने में खाना भी आपका खाते और एक मोमेंटो भी आप पकड़ा देते, चाहे मेरे पास 3600 मोमेंटो ऑलरेडी है, हालांकि क्या करना। थैंक यू सर, हसरत इसलिए पूरी कर दी सर कि अगले बार जब हमारा कोई बड़ा सेमिनार होगा तो आप जरूर आइएगा। जरूर मैं आया हुआ हूँ सर, मैं आपके नासिक आया हूँ सर। हाँ, आप आए हुए और आप आगे भी आएंगे सर, ये इनको जरूर। थैंक यू ऑल सर, टेक केयर, से हेल्दी। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। Hello, I request every member to wait. There is a request by
CJ Gujarati sir. He wants to make some appeal. So I request, he is online. I request CJ Gujarati sir to please say what you want to appeal. हा सर बोला तुम्ही. हॅलो. हा येतोय नमस्कार ऐकायला, सगळ्यांना. नमस्कार. बरं, मी सीजे गुजराती बोलतोय आणि मला एक शाळेविषयी सांगायचंय. एक शाळा, आम्ही झोपडपट्टी 3000 झोपड्या आहेत, त्या झोपडपट्टीच्या बाजूला 25 वर्षापासून आम्ही 1ली ते 8वी शाळा चालवतोय आणि ते 550 मुलं आहेत, त्यात 350 मुली आहे. हेतू हा आहे की झोपडपट्टीतल्या मुलींचे जर शाळा जवळ नसेल तर लग्न करून टाकतात, म्हणून आम्ही ही शाळा 25 वर्षापासून सुरू केली. 14 शिक्षक आहेत. आम्हाला थोडी ग्रँट आता मंजूर झालेली आहे मागच्या वर्षी, पण 20% फक्त. तर आता ती झोपडपट्टी गव्हर्नमेंटनी चुंचाळ्याला हलवली. आधी शाळा अंबडमध्ये होती, आता अंबडमधून ती चुंचाळ्याला झोपडपट्टी हलवली, म्हणून तिथे आम्हाला शाळा शिफ्ट करायची आहे. तर आम्ही एक प्लॉट घेतलाय शाळेसाठी रिझर्व असलेला, तर त्या प्लॉटवर आम्हाला बिल्डिंग बांधायची आहे. आमचा 1.5 कोटीचा खर्च आहे. झोपडपट्टीतल्या मुलांसाठीच ही शाळा असेल, तर 1ली ते 8वीची आहे, ती आम्हाला 10वी पर्यंत न्यायची आहे. तर ह्या दृष्टीने आम्हाला बिल्डिंग बांधायची आहे. तर बिल्डिंगसाठी आपण लोकांनी आम्हाला सहकार्य करावं अशी माझी विनंती आहे. आमच्या संस्थेचं नाव निराधार स्वावलंबन समिती आहे. ATGचं एक्झाम्पशन आहे, चॅरिटी कमिशन कडे सगळं रेग्युलर आम्ही. थँक्यू सर, थँक्यू फॉर द वंडरफुल सेशन सर. सर अगली बार 6-7 महीने के बाद का होए ना, आप प्लीज नासिक आइए सर. मैंने आपका यस सर, यस सर. सर शिरडी अगली बार शिरडी हम जरूर जाएंगे सर, साथ में जाएंगे सर. यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू. तर आपल्यासाठी आहे की आपण आमच्या शाळेसाठी मदत करावी झोपडपट्टीतल्या मुलांसाठी, कारण 550 मुलांपैकी 350 मुली आहेत आणि मुलींचं शिक्षण होणं झोपडपट्टीत खूप गरजेचं आहे. त्या दृष्टीने आपण सगळ्यांनी मदत करावी ही माझी विनंती आहे. आभारी आहे. हॅलो. थँक्यू गुजराती सर. नक्कीच सगळे मेंबर्सनी तुमची अपील ऐकली आहे. प्रत्येक जण त्याच्या परीने तुम्हाला कॉन्टॅक्ट करेल आणि जे सहकार्य त्यांच्याकडनं करता येईल ते करेल. तर माझा नंबर देऊ का मी? हॅलो. हा सर द्या ना, तुम्ही सांगा तुमचा नंबर. माझा नंबर 98220. सर हळू सांगा, हळू सांगा. 98220 56959. पुन्हा एकदा सांगतो, 98220 56959. CJ गुजराती. थँक्यू. ओके ओके सर. तुमचा नंबर मी चॅट बॉक्स मध्ये लिहिला आहे. पियुष सरांनी चॅट बॉक्स मध्ये टाकलाय नंबर. तर ज्यांना ज्यांना शक्य आहे प्लीज सरांशी कम्युनिकेट करा आणि त्यांच्याशी त्यांच्या या चांगल्या जे उपक्रम आहे त्याला मदत करा. सो थँक्यू एव्हरीवन. विल बी मीटिंग टुमॉरो मॉर्निंग 9:45 for the last day of our direct tax refresher course. So thank you for today. We will meet tomorrow morning. Good day everyone. Okay, thank you.